Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is sequence alignment. This topic is too much important in context of bioinformatics, and whenever you go through bioinformatics, you will face sequence alignment. And sequence alignment is actually like we have to first go through different terms which are used in bioinformatics for sequence alignment. Like the first one is query, and query is the input for a search. Like when we need to search something, we have to ask some question from the databases, or from from the banks, the information banks. So we have to have some input, like against which we will require the information, and that input for a specific search is actually query, and that query is certain defined things, like that could be according to predefined rules and an automated algorithm. So the query is actually the input of a search. And next is algorithm. What is algorithm? A procedure of solving a problem. This is simple. Like when we gonna go for solving a problem, the procedure is actually the algorithm. So algorithm is the procedure of solving a problem. A computer program can be viewed an elaborate algorithm. So if you need to go to the admin block, so the way and the procedure you go through is actually algorithm, and same applies to the bioinformatics and applies to the computational sciences. And next is alignment. So what alignment actually is, the identification of similar regions. So alignment, we do align different sequence to identify similar regions. We need to know similarities between two things. Like we want to know either birds are similar to the reptiles. So if we want to know the similarity between the two, like what are the similar between the two things, we have to align them. Like we can say the eyes are similar between the two things and between the two different species. So alignment is actually identification of similar region in two or more sequences. That could be, those could be nucleotide or amino acids. And next is open reading frame. Open reading frame is a stretch of DNA which codes for protein. You know better than me the open reading frame and the CDS. We have previously talked about that, the difference between the open reading frame and the CDS. So I don't want to go into detail in like what is actually open reading frame. So who will explain this slide? सर मैं करूं? जी प्लीज। सर सबसे पहले है क्वेरी. क्वेरी के अंदर हम लोगों ने अपनी इनपुट देनी है, जो चीज भी हमने सर्च करनी है. फॉर एग्जांपल हमने एक स्पेसिफिक सीक्वेंस सर्च करना है, तो उसके लिए कुछ प्री डिटरमाइंड रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है वो हम लोगों ने अपनी जो क्वेरी है वो इनपुट करनी है. देन आता है एल्गो थ्योरम. एल्गो थ्योरम वो प्रोसीजर है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यूजिंग कंप्यूटर टूल्स. उसके बाद अलाइनमेंट है. अलाइनमेंट के अंदर हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे सिमिलर रीजन्स की, कि कौन कौन से रीजन्स थे वो हमारे पास सिमिलर आए हैं. और ओपन रीडिंग फ्रेम जो है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन्स को कोड करते हैं. मतलब हमारे पास ओपन रीडिंग फ्रेम जहां से हम लोग एक प्रोटीन को स्टडी करते हैं या उसको कोड करते हैं, वो हमारे पास सीक्वेंस होता है जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं. और CDS हमने पढ़ा था ना कि व्हाट इज CDS? यस सर. ठीक हो गया, ठीक हो गया, that's good. And moving further is orthologs. So orthologs are the genes in different species that are involved, they evolved from a common ancestral gene by speciation. So they are the same genes present in different species. For example, alpha hemoglobin in man
and mouse. So man and mouse, they are different species, they are different genuses. So they have the same gene, the alpha hemoglobin. So the alpha hemoglobin in different species will be called as orthologs. So orthologs will be the same gene in different species. And if we compare it with paralogs, so paralogs are genes related by duplication within a genome. So if a gene is duplicated within the same genome, for example, so that will be called paralogs. For example, alpha and beta hemoglobin. So their ancestor is same. It gives rise to alpha hemoglobin and beta hemoglobin, two different same genes with the two different like chains they evolve, and that those genes will be known as paralogs. So orthologs, same gene in different species, and paralogs, when a gene duplicates within the same genome, that will be paralog. So example is alpha and beta hemoglobin in human, and here alpha hemoglobin in man and mouse. And next is to retain the same function. So this is actually the addition to this paralog and orthologs. To retain the same function of the course of evolution, so orthologs retain the function actually. So orthologs, so that means in mouse and man, the alpha hemoglobin will have the same function, whereas paralogs, the two genes that evolve from the same ancestor that duplicates, they will have different function. So paralog evolve new function even if they are related to the original one. So now these alpha and beta hemoglobins, they will have different function. They will have different function from each other. So this is only the difference between the two. The one of the difference is they have different homes, and this will have same home, this will have same, these will have, even though they have different homes, but they will have same function. Even though they have same home, but they will have a different function. They will have same function, they will have different function. So who will explain? जी, फातिमा रमजान, please. यस सर, इसमें ये है कि ऑर्थोलॉग जो है वो डिफरेंट स्पीशी में एक ही जीन है जो सेम एंसेस्टर से आया है, उसका फंक्शन भी सेम ही होगा, वो इवॉल्व नहीं होगा आगे जाके। और पैरालॉग में ये है कि एक ही स्पीशी के अंदर उसकी डुप्लीकेशन है एक ही जीन की, मतलब वो दो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, वो अल्फा बीटा है ऐसे हैं, तो उनका फंक्शन चेंज हो जाएगा और वो ऑल हो जाएंगे। ठीक हो गया। सो ऑर्थोलॉग वो प्रोटीन्स या वो जीन्स हैं कि सेम जीन हो, दो डिफरेंट स्पीशीज में वो मौजूद हो। लाइक अल्फा हीमोग्लोबिन मैन के अंदर भी है और माउस के अंदर भी है। सो अल्फा हीमोग्लोबिन दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है। इन दो जीन्स को हम ऑर्थोलॉग्स कहेंगे। अच्छा, क्योंकि वो सेम जीन्स हैं, इनके फंक्शन सेम होंगे। लेकिन पैरालॉग क्या है? एक जीन डुप्लीकेट करेगा, मींस एक जीन से दो जीन्स बन जाएंगे, मीन्स के अल्फा और बीटा हेमोग्लोबिन बन गया है। सो अल्फा और बीटा हेमोग्लोबिन के फंक्शन भी डिफरेंट होंगे, मीन्स के फंक्शन भी वो इवॉल्व करेंगे, फंक्शन डिफरेंट होंगे। सो अल्फा और बीटा हेमोग्लोबिन जो है, इनको फिर हम क्या कहेंगे? पैरालॉग। ये एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होंगे। पैरालॉग लाइक ह्यूमन के अंदर जो पैरालॉग्स हैं, तो एग्जांपल इन्होंने दिए कि अल्फा एंड बीटा हीमोग्लोबिन ह्यूमन के अंदर जो है, सो ये दो जीन्स जो है ये क्या होंगे? ये पैरालॉग्स होंगे, लेकिन इनके फंक्शन डिफरेंट होंगे। जी सर ये जो ऑर्थोलॉग्स, जी तो शफीक। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ऑर्थोलॉग्स को ही हम डिफरेंट स्पीशीज के इस्तेमाल करके, यानी उनके सीक्वेंस में देख के तो फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं।
एग्जैक्टली हम ऑर्थोलॉग्स को मेनली हमारा फोकस ऑर्थोलॉग्स पे होता है, पैरालॉग भी कर सकते हैं वैसे। ओके सर। ठीक है, चलें आगे हम जाके इस यही चीजें हैं कि हम लाइक डिसिमिलर सीक्वेंसेस है, सिमिलर है, हाउ दे बिहेव एक्चुअली। जी सर पैरालॉग्स जो है वो डिफरेंट फंक्शन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जीनोम सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर चेंज होगा। एग्जैक्टली हम आगे जाके हमारा एक और वो है कि स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप का भी एक टॉपिक है हमारा, तो हमने उसमें फिर डिटेल से पढ़ना है कि हाउ द फंक्शन वेरी, हाउ द सीक्वेंस वेरी, हाउ मच द सीक्वेंस कैन वेरी, हाउ मच द स्ट्रक्चर कैन वेरी, एंड हाउ मच इट अफेक्ट द फंक्शन। बहुत सारे केसेस में सीक्वेंस भी चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, लेकिन फंक्शन चेंज नहीं होता। सो वी विल बी स्टडीइंग दोस इन डिटेल एज वेल। जी ठीक है, शुड आई गो फर्दर? यस सर। Okay, so next is, so sequence alignment towards our topic actually. These are two sentences and we want to know the similarities between the two. For this, we use sequence alignment in bioinformatics. And like, check this sentence. And so from hour to hour, we ripe and ripe. So
So sorry. Okay, so we have these two sentences, and these two sentences, like if we want to know the similarity between the two, like if you imagine we have these two sentences and we don't know the language. If we imagine we don't know the language, what does it mean? So what we will do, we will know one thing, one sentence, and we will align that with the other. In that way, we can understand what that mean actually. Like same applies with the DNA sequences. We don't know the sequence. We don't know either what the sequence it means. Like if it is that is insulin, we don't know like this from the sequence. So what we will do, we will align the sequence with some known sequence. And with alignment, if you can see, if we align these two sentences, what will happen? Some of them will have some, well, we will get some matches, some mismatches, some insertions, like here, some insertions, some deletions. We will get like these things. And with more similarities, with more matches, that will mean this region is same. So if you can see, the from our to our we, so if you can see, they exactly align. So that will mean this area has the same function, they have the same region from our to our. So if we know the function of these, so from our to our we, and we can understand the same thing is also available in the other sequence. So this is how alignment is important. So we will get some deletions, deletions, some mismatches. You can see so and en, so some mismatches. All of these sort of things we will go through. We will get in the sequence alignment. Who will explain? Come on. Aliza? Okay, Faika is there. Faika? Yes sir. जी अलीजा प्लीज एक्सप्लेन करें व्हाट डज दैट सर आपने इसमें बताया कि ये सिमिलैरिटी देखते हैं, अलाइनमेंट देखते हैं ये दोनों सेंटेंसेस में, और इसके अंदर मिसमैचेस और इंसर्शंस एंड डिलीशंस एंड मैचेस देखते हैं, एक दूसरे को कंपेयर करते हैं दोनों सेंटेंसेस को. एग्जैक्टली. सो एक डीएनए या प्रोटीन सीक्वेंस में उनके न्यूक्लियोटाइड या अमीनो एसिड से हमें पता नहीं चलता कि उसका व्हाट द सीक्वेंस इज फॉर. लाइक वी डोंट नो, लाइक एक सीक्वेंस है वो इंसुलिन का सीक्वेंस है, उसने इंसुलिन प्रोटीन बनानी है, या इवन हम अगर प्रोटीन के सीक्वेंस को देख लें, वी डोंट नो द फंक्शन. सो अगर एक हमारे पास एक सीक्वेंस अननोन हो, हमें किस तरह पता चलेगा कि इसका फंक्शन क्या है? दैट कुड बी थ्रू अलाइनमेंट. हम अगर इसको अलाइन करेंगे, सो दो मेन रीजंस हैं जो सिमिलरिटीज के हैं, वी विल गॉट दैट, एंड फ्रॉम दैट वी कैन like have an idea about the function. Am I clear to all? Yes sir. सर ये जो लाइन लिखी हुई है एंड सो फ्रॉम आर टू आर वी राइप एंड राइप, ये एज एन एग्जांपल लिखी हुई है या फिर आता ही इसमें यही है सीक्वेंस अलाइनमेंट में? No, this is just an example. We will not have these sort of things in alignment actually. This is an example actually. We already know the sentence and this sentence as well. So this is just an alignment example of this, like from the language. Otherwise, from English language. Otherwise, in sequence alignment, there is nothing like this. Okay. So and next is, so now there are two types of alignments. The first one, basic types. The first one is global, and the other one is local sequence alignment. So global sequence alignment includes residue to residue comparison of two or more sequences as a whole.
from 5 prime to 3 prime for DNA and N terminal to C terminus for amino acid. So that will mean if we have a sequence, so and we have another sequence, we have two sequences, so we align, if we align them from end to end, from this end to this end, if we align them, this will be global alignment from 5 prime to 3 prime. So this will be R from N terminus to C terminus in protein. So this will be global alignment. Global alignment will mean from end to end. Okay, and from this end to that end, that will be global alignment. And what will be local alignment? Local alignment includes a comparison of any identical or similar sequence page in any part of the complete sequence. So if we have two sequences and these two sequences has some similarity in some specific region, like if it has similarity in this region, so local alignment, what it will do, it will align only this region. Only this region will be aligned, and so now when this region is aligned, this will be now known as, so in whole of the sequence only this is aligned, so this will be local alignment. So this will be local alignment. And what was actually global alignment? Global alignment was from end to end. That was from end to end. सर लोकल दोबारा समझा दें. So लोकल ये है, ग्लोबल क्या था, हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं, उनको अलाइन किया फ्रॉम एंड टू एंड. But in local alignment there may be certain sequences जिनमें क्या हो कि जिनमें कोई specific region में similarity हो, identities हो, बाकी कोई similarity नहीं हो. So उस केस में हमने क्या करना है, local alignment करवानी है. लोकल अलाइनमेंट में क्या होगा कि वो एक स्पेसिफिक रीजन जो है वो अलाइन हो जाना है, बाकी कोई रीजन अलाइन नहीं होना. ठीक है, सो दैट विल बी, दिस विल बी लोकल, मींस के सम स्पेसिफिक लोकेशन पे अलाइनमेंट हो, सम स्पेसिफिक लोकेशन की आइडेंटिटी ज्यादा है तो वो रीजन हमें शो होगा. ग्लोबल में एंड टू एंड मींस के ये दोनों सीक्वेंसेस पूरे सेम है या सिमिलर हैं. ठीक है, सो अगर सिमिलर सीक्वेंसेस हैं तो फिर वो ग्लोबल अलाइनमेंट करवाएंगे ताकि एंड टू एंड जो है वो अलाइनमेंट हो जाए, एंड वी नो कि व्हाट एक्चुअली द होल सीक्वेंस इज इन कंपैरिजन विद द अदर. ठीक है, am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and कौन इसको एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि आगे फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. यहाँ पे अगर कोई एक्सप्लेन कर दे ताकि we have easy in going further. सर मैं बताऊं? जी जी सर दो तरह की सीक्वेंस अलाइनमेंट होती है. एक फर्स्ट टाइप होती है ग्लोबल एंड सेकंड इज लोकल. ग्लोबल में जो एंड टू एंड होती है, यानी फर्स्ट रेजिड्यू चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो, चाहे प्रोटीन हो, उसके फर्स्ट रेजिड्यू से लेके लास्ट रेजिड्यू तक दोनों जो डिफरेंट दो सीक्वेंस है उनके दरमियान या सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी मेजर आउट की जाएगी. जो लोकल अलाइनमेंट है उसमें किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जहां पे दो सीक्वेंस मैच कर रहे हैं या डिसमैच कर रहे हैं तो वहां पे पॉइंट आउट किया जाएगा. ये डिफरेंस है. ठीक हो गया. ठीक है. Okay, so now global alignment is, उसमें क्या होगा global alignment में, the input treat two sequences as potentially equivalent. So if we have two sequences like from the same viral sequences, from the same virus, if we have two HCV sequences, or we have two insulin sequences, or we have two same sequence, like the input treat the two sequences as potentially equivalent, means the size of the sequence is also equivalent. So
we will go for global alignment. In global alignment, the goal is to identify conserved region and differences. So both conserved region and differences, we are interested in both the conserved region and also in the differences of the whole sequence. Algorithm, which algorithm will be used? We already discussed what algorithm is actually. So Needleman and Wunsch dynamic programming is an algorithm. These are the two scientists that generated this algorithm for global alignment, and the algorithm will be used. What is the name actually? Needleman and Wunsch dynamic programming. And application, what are the application of global alignment? Comparing two genes with same function, like in human and in mouse, the same gene, the alpha hemoglobin, for example, in human and in mouse. So if we compare the same function of a gene, so we will gonna go for global alignment. And comparing two proteins with a similar function, so we will go for global alignment. And next is local alignment. The two sequences may or may not be related. If the two sequences are not related, see whether the goal, what is the goal actually? See whether a substring in a sequence align well with a substring in the other sequence. So if we have to check either a part of one substring is same as the part of the other substring, so that will be we will go for local alignment. So if we want to check that there are two sequences and we want to check some of the sequence is similar with some of the sequence in the other sequence, so we will go for local alignment to check the local comparison. And what algorithm will be used? Smith and Waterman dynamic programming. So that the previous one was Needleman and Wunsch, and that this is Smith and Waterman. And note is for local matching, overhangs at the ends are treated as gaps, not as treated as gaps. So ends को consider ही नहीं किया जाएगा, gaps उसकी like gaps को consider नहीं किया जाएगा, उसको like ये consider नहीं किया जाएगा. बाकी जो जहाँ जहाँ पे वो align करेगा तो वो देखा जाएगा. Like if we have a sequence and दूसरा sequence जो है वो हमारे पास ये दूसरा sequence है and इसमें ये region जो है वो सेम है, तो हमने क्या करना, इस रीजन को अलाइन कर देना, लोकल अलाइनमेंट के थ्रू ये रीजन अलाइन हो जाना है. और एंड्स जो है ये गैप कंसिडर नहीं होंगे, मींस कि ये कंसिडर नहीं होगा कि ये गैप है, क्योंकि इन अलाइनमेंट वी गेट गैप्स, वी गेट मिसमैचेस, सो गैप्स के लिए पेनल्टी होती है, सो इसको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा. ठीक है, इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, गैप्स को, इसको गैप्स कंसिडर नहीं किया जाएगा. तो इस तरह से ये रीजन जो है ये अलाइन हो जाना है. ठीक है, so and we will get the information from that and by using Smith and Waterman dynamic programming. And applications are searching for local similarities in large sequences. So newly sequenced genomes जो है उसमें अगर हमने देखना है कि कोई specific region है, what is actually it relates to, we will go for local alignment. And next is looking for conserved domains and motifs. If we want to check for conserved domains and motifs in two proteins, better go for local alignment. Am I clear up till now? Yes, sir. Yes, sir. That's good. And next is semi-global alignment. So two sequences, one short and one long. Is the short one is a part of longer one? So that is the goal. And for this, we will go for semi-global alignment. And this will be modification of Smith and Waterman algorithm, and given a DNA fragment with possible errors, so look for it in the genome and look for a well-known domain in a newly sequenced protein. So if we have a sequence, if this is a sequence and we have another sequence, some smaller one, and we want to see either this sequence has similarity in the larger genome, larger sequence, so we will go for like one is shorter and one is longer, so we will go for semi-global alignment.
And next is suffix prefix alignment. So suffix is the end, is the start of a sequence, and prefix is the end. So two sequences, usually DNA, goal is the prefix of one is the suffix of another. So modification of Smith and Waterman again. So DNA fragment assembly is application. So if we have a case of like we have a sequence, this one, we have some another sequence, and these two sequences has similarities in the prefix and the suffix. So one has a suffix and the other has similarity in the prefix of the other. So these here the similarity in this region, now the two sequences have similarities at their end. One is suffix and the other one is prefix. So so for we need to align it like this one. So for that we will use suffix prefix alignment, and that will be modified Smith and Waterman. So DNA fragment assembly is also having the same function. DNA fragment assembly में क्या करते हैं, हम सीक्वेंस करते हैं एक सीक्वेंस को, फिर दूसरा प्राइमर यहाँ से यूज करते हैं, एंड सेकंड सीक्वेंस इज दिस वन, फिर थर्ड नेक्स्ट प्राइमर यहाँ से हम यूज करते हैं, और इस तरह आता है हमारे पास सीक्वेंस, and then is this one. So we need to align them, and after alignment we align them, and after alignment we will get the sequence. हमारे पास ये sequence आ जाना है, and once we sequence them we got the final, we align them by checking, by aligning we got only one single sequence, because there are overlapping regions, so we will remove the overlapping regions and we get only this sequence. So this is actually DNA, these are DNA fragments, and we have assembled these DNA fragments to get one longer sequence. So this assembly, sequence assembly, is done through suffix prefix alignment. And next is heuristic alignment. Heuristic alignment is a bit different, and heuristic alignment mean intelligent alignment, and this will mean two sequences. Goal is input is two sequences. Goal is to see if these two sequences are similar, are a candidate, are candidates for an alignment. So go for BLAST, and BLAST is actually the basis are heuristic alignment. So what is the difference between heuristic and local and global actually? So in local and global we provide both sequences, all sequences we provide them, but in heuristic alignment we provide only one sequence, and the database then search that sequence that has already having multiple types of sequences. So it already have the sequence bank, it has too many sequences, and heuristic alignment, and this is the data bank, and we have we have uh, wait, okay, and we have a sequence, and we don't know actually the function of this sequence. We need to align, we need to know which sequence it will correspond to. So we need to align this sequence number by number with different sequences, and we got to know that this sequence, our sequence, is most similar to this one. So we will check what this sequence is, and we will get to know like this sequence is HBV sequence. So we will know our sequence is also HBV because it align with more identities with HBV sequence, and we got it from the data bank.
So BLAST, what BLAST actually do, BLAST actually like do heuristic alignment. It will search our sequence in a group of sequences in a data bank. It will search our sequence from the data bank, and it will search the more identical sequence and come up with a sequence that yeah, this is our sequence that is more identical to some specific sequence, and that's it. And BLAST is actually basic local alignment search tool. Basic local alignment search tool. So this is a basic local alignment search tool, and if you can see the name, it contains local alignment. It is based on local alignment, but it will search the our sequence in the database. Before this, what we were doing, we were actually having our sequence and we need to align with some other sequences we are providing with. We will provide the sequence to align with, but in heuristic alignment, we will only provide our sequence and the database and the BLAST will search our sequence in a database for similarities. Am I clear? यस सर। जी जी सर पर सर जी इसमें जी आपने कहा है कि एक हम लोग सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं, तो फिर इनपुट यहाँ पे 2 सीक्वेंसेस, इसका क्या मतलब है? ये समझ नहीं आ रहा। होए 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 होए, ये जो गोल में लिखा हुआ है, सर ये जो इनपुट लिखा हुआ है, हाँ जी, गोल से ऊपर। हाँ अच्छा, इनपुट में सिंगल सीक्वेंस होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये वहां पे ये करेगा क्या, दिस विल अलाइन, वेट, this is based on, we will provide one sequence and this will search in a database and it will align only with one sequence at a time. ये एक सीक्वेंस के साथ अलाइन करेगा, ठीक है। सो एल्गोरिदम को एक्चुअली 2 सीक्वेंस प्रोवाइड होते हैं, हमने एक प्रोवाइड किया है, दूसरा जो है वो ब्लास्ट का सर्वर प्रोवाइड करेगा, एक एक सीक्वेंस के साथ अलाइन करेगा। सो एल्गोरिदम ने वो एक एक सीक्वेंस के साथ अलाइन करके जाना है, ठीक है। मींस एक्चुअली 2 सीक्वेंसेस हो जाने हैं उस तरह, ठीक है। सो ये 2 सीक्वेंस अलाइनमेंट है, ये उस कॉन्टेक्स्ट में है, 2 सीक्वेंस अलाइनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है। 2 से ज्यादा सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं, वी विल टॉकिंग अबाउट इट लेटर ऑन, लाइक 2 से ज्यादा सीक्वेंसेस किस तरह हो सकते हैं, ठीक है। बट योर पॉइंट इज वैलिड। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन क्लास? एक्सक्यूज सर। जी जी प्लीज। सर ये आज बहुत ज्यादा मिक्स हो गया। कहाँ मिक्स हो गया है? सर पहले 3 तो समझ आ गए थे, उसके बाद इतना ज्यादा वो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। अच्छा, हम एक और स्लाइड पढ़ते हैं और फिर ख़त्म करते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते आज, ताकि थोड़ा सा डाइजेस्ट हो, एंड वी विल गो फर्दर। लाइक ये टॉपिक जो है, ये पूरा जो है वो एक ही लेक्चर में हो जाना चाहिए, लेकिन इसको समझना इम्पोर्टेंट है क्योंकि तमाम सारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बेसिस यही अलाइनमेंट ही है। चाहे हम प्रोटीन मॉडलिंग की तरफ जाएं या डॉकिंग की तरफ जाएं, सो अलाइनमेंट इज़ द बेसिस फॉर देम एज वेल, ठीक है। सो I can understand things are new and they mess up like this, but we have no other way but to describe things and to understand and try to understand actually. And after that, pairwise sequence alignment kya hai? So this is the same thing. Pairwise sequence alignment is an alignment of 2 sequences obtained by inserting gaps such that the resulting sequences have same length and where each pair of residue represent a homologous position. So एंड इसमें पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट में क्या होगा, 2 सीक्वेंसेस हम अलाइन करेंगे, बट इन मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट MSA has been can be seen as a generalization of pairwise sequences. Instead of aligning 2 sequences,
n number of sequences are aligned simultaneously where n is more than 2. And multiple sequence align is obtained by inserting gaps in the sequence such that resulting sequence have length L and can be arranged in a matrix n rows and L columns, which can where each column represent homologous position. So this is actually multiple sequence alignment. You can see we have 6 sequences. These are 6 different types of sequences. We start from here and यहाँ तक विंडो खत्म हो जानी है, तो विंडो यहाँ से सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है, मींस के this is 10, these are 10 nucleotides, 20, 30, 40, 50, 60. अब इसके बाद जो है 61 is here, so that is 70 now, 80, 90, 100, 110 to 120, and after that it start from here and so on. So if you can see the nucleotide number 1, so this sequence is like the position 1, it corresponds to nucleotide number 1. And if you can see, there are no gaps being seen here. That will mean this is not aligned. ये just यहाँ पे paste किए गए हैं, align नहीं हुए. When there are gaps, you can see here, multiple sequence alignment are this sequence alignment, pairwise sequence alignment are obtained by inserting gaps in the sequences. So gaps are not there, so they are not aligned. And if you can see there, there are certain gaps. Here is the gap. Here is the insertions. This is the insertion, this is the deletion, this is the deletion. So insertion and deletion and substitution, like T has been substituted with C. And again, this is T and here is A. So again, this substitution is here. Substitutions, deletions, insertions. So they are common in alignment. So this is now aligned sequence. Up till now it's clear? यहाँ तक क्लियर है? Am I clear? Yes, sir. जी, कौन एक्सप्लेन करेगा? सर मल्टीपल सीक्वेंस नहीं समझ आया. मल्टीपल सीक्वेंस में ये होगा, previously we have talked about pairwise sequence alignment. So we can align 2 sequences. We can align 2 sequences. But if we align more than 2 sequences, like here, the n number of sequences will be more than 2. That will be more than 2. So if we align more than 2 sequences, then it will be called as multiple sequence alignment. And in multiple sequence alignment, each residue will represent each, multiple sequence alignment by inserting gaps in the sequences such that resulting sequence has the length L and can be arranged in n matrices. Matrices means each nucleotide here will be the nucleotide number 1. This will be the number 1 nucleotide. After that, this will be number 2 nucleotides, and all of them will be aligned, or they will be aligned. So all of the sequences showing there is okay. So L number of rows is n. Number of rows means these are the rows actually. So these are the number of sequences are actually the number of rows. This is sequence 1, 2, 3, 4, and in the coming slide there are actually 6 sequences. So 6 number of rows are there. And what are the columns? So this will be column number 1, nucleotide number 1. This will be column number 2. This will be column number 3 according to the nucleotides. This will be column number 4. This will be column number 5. The nucleotides are actually, they represent the columns. So L number of rows and n number of rows and L number of columns, and each column represent, so if we have these columns, so each column represent homologous
position. So this is a homologous position for all sequences. This is a homologous position for all sequences. So they represent homologous positions actually. They represent homologous positions. समझ आ रही है? And in the coming slide, if you can see, this one represent homologous position, this one represent homologous position, they represent homologous position. So all of these columns, they represent homologous position, and these are the number of rows, and these are the columns. So number of species, they are actually the rows, number of sequences, they are actually the rows. That's it. Okay, sir. समझ आ गई है? फाइका? Yes, sir. So Fatma, sorry, Fatma. And who will explain? Kaleem is there, Kaleemullah. Kaleem, please explain. Your turn now. सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी please. स्लाइड पीछे करना, 10 वाली स्लाइड। स्लाइड नजर नहीं आ रही है? अभी आ रही है जी? जी बताएं। अभी 12 में शो हो रही है सीक्वेंस वाली। ये वाली सीक्वेंस वाली, ये वाली ठीक है, चलें। स्लाइड शो हो गया है। आपको शो नहीं हो रही स्लाइड? 10 वाली। पहले 10 ही थी जी, आप बताएं। नो सर, ये सीक्वेंस वाली शो हो रही है जिसमें वो मिसिंग्स हैं, डिलीशंस हैं, इंसर्शंस हैं, उस वाली वो अभी शो हो रही है। अब 12 वाली शो हो रही है। थोड़ा वेट कर लें, ये खुद ही शो हो जानी है। अब देखें हो रही है। नो सर, ये 12 वाली है। क्लास कौन सी स्लाइड शो हो रही है? क्लास सर 10 वाली हो रही है। कलीम 10 वाली हो रही है, पहले भी 10 वाली हो रही थी। आप शो जी बताएं। सर अब शो हुई है। जी बताएं। सर एक है जो इसमें हमने देखे हैं पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट और मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट में हम देखते हैं कि दो सीक्वेंस से हम देखते हैं कि उसमें इंसर्शन गैप्स और होते हैं कि कितने गैप्स हैं या डिलीशंस हुई हैं। मल्टीपल सीक्वेंस में हम जैसे आपने बताया कि हमने देखे हैं 6 रोज थी, उसमें हमने फिर उसमें 6 रोज और कॉलम में देखा कि कितने गैप्स और हो रहे हैं या कितनी सिमिलैरिटीज हैं, ये चीज थी इसमें। अच्छा, कोई और एक्सप्लेन कर देगा इसको? जी फातिमा। यस सर, इसमें ये है कि पेयर वाइज में हम 2 सीक्वेंसेस लेंगे और उनके अलाइनमेंट करवाएंगे, और गैप्स भी अगर हमने डालने पड़े तो हम उसकी पोजीशन को एक जैसे करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स की दोनों पेयर्स में। सही है। और मल्टीपल में ये है कि हमारे पास 2 से ज्यादा सीक्वेंसेस हैं और फिर हम उनके अलाइनमेंट करेंगे कि उसके सारे न्यूक्लियोटाइड्स फर्स्ट वाला फर्स्ट सारे एक साथ हों और सेकंड वाले सारे एक साथ हों। इस तरह फिर हमें पता चलेगा कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है और सेकंड पे कौन सा है, और उनको होमोलोगस पोजीशंस कहेंगे। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। एंड और कौन एक्सप्लेन करे? हिजाब इज देयर? हिजाब प्लीज एक्सप्लेन करें इसको। आ जाए प्लीज, आ जाए जी। हिजाब, हाँ सुरेश साहब बैठे हुए उनसे मिलने मतलब अभी बैठे थे। सामने देख लें, सामने पर होंगे। मैं क्लास फ्री होके फिर आता हूँ। जी जी हिजाब प्लीज। ओके फायजा कुद्दूस। फायजा। यस सर। जी बताएं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अभी तक जो पढ़ा है। चलें इस स्लाइड को छोड़ के और बताएं कुछ जो पढ़ा है आज, सो उसको समराइज कर लें। जी सर,
सर सबसे पहले हमने शुरू से आपने बताया था कि क्यूरी क्या होती है कि कोई भी इनपुट हम दे रहे हैं अगर कुछ सर्च करना है, और उसके बाद हमने एल्गोरिदम्स का पढ़ा कि एल्गोरिदम कोई प्रोसीजर होता है, कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी है तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई प्रोसीजर होता है और ये कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। उसके बाद अलाइनमेंट का पढ़ा था कि अलाइनमेंट जो होती है वो सिमिलर सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं हम उसमें। फिर हमने ऑर्थोलॉग्स का पढ़ा था कि ऑर्थोलॉग्स जो होते हैं वो डिफरेंट स्पीशी के अंदर जो जीन्स होती हैं उनको वो इवॉल्व हो रही होती हैं, डिफरेंट स्पीशी के जीन्स को हम ऑर्थोलॉग कहते हैं। और पैरालॉग कहते हैं कि एक ही जीन के अंदर जो एक ही जीनोम के अंदर जो जीन है वो उसकी डुप्लीकेशन हो रही हो। और ऑर्थोलॉग जो होता है वो आपने बताया था कि वो सेम फंक्शन होता है और उसमें डिफरेंट होम्स होते हैं, और पैरालॉग में सेम होम होगा और डिफरेंट उसके अंदर फंक्शन होगा। और उसके बाद हमने अलाइनमेंट का पढ़ा है, ग्लोबल अलाइनमेंट पढ़ी है और लोकल अलाइनमेंट पढ़ी है। जो ग्लोबल अलाइनमेंट होती है वो हमने देखा था कि वो होल जीनोम की हम कर रहे होते हैं, 5 प्राइम से 3 प्राइम अलाइनमेंट होती है या फिर एन टर्मिनल से सी टर्मिनल अलाइनमेंट होती है। और लोकल अलाइनमेंट जो होती है वो हम करते हैं किसी पर्टिकुलर या कोई हमने स्पेसिफिक सीक्वेंस को कंपेयर करना है अगर, तो उसके लिए हम लोकल अलाइनमेंट करते हैं। फिर हमने इनके आगे जो एल्गोरिदम्स पढ़े हैं इसके बाद मतलब हमने देखा है कि लोकल अलाइनमेंट के अंदर कुछ और टर्म्स पढ़ी हैं और फिर ग्लोबल अलाइनमेंट के अंदर पढ़ी हैं। ह्यूरिस्टिक अलाइनमेंट का आपने बताया कि ये जो होता है इसमें ब्लास्ट जो है वो एल्गोरिदम यूज हो रहा होता है। उसमें हम 2 सीक्वेंसेस लेते हैं, एक सीक्वेंस हम खुद देंगे और एक सीक्वेंस जो है वो हमारा जो सर्वर ब्लास्ट सर्वर है वो प्रोवाइड करेगा। फिर पेयर वाइज अलाइनमेंट पढ़ी है कि पेयर वाइज अलाइनमेंट के अंदर जो है वो 2 सीक्वेंस हम प्रोवाइड करते हैं और 2 सीक्वेंस जो होते हैं उनको सेम हमने वो सेम अलाइनमेंट किस तरह से होती है कि उसके अंदर जो है वो गैप्स इंसर्ट करते हैं और जो उसके कॉलम्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं होमोलोगस पोजीशंस। उन जो भी हमने सीक्वेंस दिए हैं उनकी होमोलोगस पोजीशंस बताएंगे। इस तरह मल्टीपल सीक्वेंस के बारे में पढ़ा है कि मल्टीपल सीक्वेंस में हम जो मल्टीपल सीक्वेंसेस लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 2 से ज़्यादा सीक्वेंस लिए हैं और उन जो कॉलम्स होंगे वो उनकी होमोलोगस पोजीशंस को बताएंगे और जो रोज होंगी वो हमें नंबर ऑफ जो सीक्वेंस स्पीशीज होंगे वो बताएंगे। अच्छा, दैट्स ग्रेट ग्रेट गुड। अच्छा, जस्ट एक एडिशन के ब्लास्ट में जब हम सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं तो एल्गोरिदम ने क्या करना है, उस एक सीक्वेंस को लेकर एक सीक्वेंस दूसरे एक सीक्वेंस को उसके साथ अलाइन कर देना है। मींस पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट है, लेकिन वो दूसरा सीक्वेंस वो कहाँ से सेलेक्ट करेगा, वो अपने डेटा बैंक से करेगा। मींस बहुत सारा ग्रुप ऑफ सीक्वेंस वहां से एक सीक्वेंस सेलेक्ट करेगा। ऑलरेडी जो डेटा अवेलेबल है, जितने भी सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं, वहां से एक सीक्वेंस निकाल के प्रोवाइड करेगा कि दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस, मोस्ट क्लोजर सीक्वेंस to the sequence we have asked for. So that is more intelligent. हम 2 सीक्वेंस इस तरह प्रोवाइड नहीं करते, लाइक मैं ये नहीं कहता उसको कि ये 2 सीक्वेंस को कंपेयर करके दे दो। क्या मैं एक सीक्वेंस प्रोवाइड करूंगा, उसने दूसरा सीक्वेंस डेटा बैंक से निकाल के देना है, अपने ग्रुप ऑफ सीक्वेंसेस से निकाल के देना। सो दैट इज मोर फिजिबल, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग, दैट इज मोर रिक्वायर्ड एक्चुअली। लाइक हमेशा के लिए या मोस्ट ऑफ द केसेस वी हैव अननोन सीक्वेंसेस। So for those unknown sequences, BLAST is the superior technology and the superior way to check for the identities. But BLAST, again, BLAST it means basic local search tool है ये। तो basic local alignment search tool. So that will be based on the local alignment, but that is again heuristic as well. For previously the local alignments, we compared 2 known sequences, we provide 2 sequences, but in heuristic we provide only 1 sequence. It will align that sequence from the sequences in the data bank, in the sequence bank actually. Am I clear? Yes sir. That's good, that's good. And going towards
the exact the keyword search is the exact matching. Actually, the algorithm behind that will search the exact name. Like I write Muhammad, so that will search the name, the word Muhammad everywhere, from the databases. And can be done quickly, and that's a straightforward scan, because it will scan different documents, and where it it finds Muhammad, it will bring that document to us. And like example is entries, Google search, and that's it. Okay, and if we compare the keyword search with alignment, so comparing keyword and alignment is, in alignment there is no exact match. Like it is not like possible that if we write, if we give ATGC a sequence, and that sequence will be like if it is ATGTG. So the alignment search will not search for this whole term. It will be scored, it will be matched through scoring. And it is not the exact, like the term, the exact full sequence will be matched. It's not like that. So it's take much more time, and used in tools like BLAST, CLUSTAL. So it will align that to certain sequences. It may be aligned that with a sequence, like if it can be aligned with A, G, T, G. So it will say it is this percent identical to this sequence. So so in this way, the keyword search and alignment is different. So this is how alignment works. But in keyword search, it will exactly try to find the exact sequence. Am I clear or not? Yes, sir. So in okay, so in keywords, what it will do, like I have a sequence, this name. So it will search the exact name. It will search the exact name rather than the sequence. It will search the exact name. It will not give us the name. It will not give us the result like. So it will not it will not give us this result. Like it will not give us MOHA. If I write MUHAMMAD, it will search for the exact name, exact term. But in alignment, it will give us this. It can give us this thing as well. Is it clear now or not? Yes, sir. Okay, so moving further. सर जी please. सर ये जो स्कोर्ड मैचिंग लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो एवरेज आती है दोनों सीक्वेंसेस की, कि कितना वो मैच हुआ है. हाँ, like 90% match हुआ है, 80% match हुआ है, 70% match हुआ है. So this will be the scored matching, and this will be the exact matching. ये 100% match होके ये term देगा, ठीक है? So this is a straightforward scan, exactly. But this will be different from that, and there are algorithms like BLAST, CLUSTAL that will work behind the scene. Like in BLAST, there will be local alignment. In CLUSTAL, it is actually global alignment. And we will be talking about all these things later on in the coming slides. Is it clear up till now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and moving further. Okay, and in multiple sequence alignment, why we need that? Multiple sequence alignment can help to develop a sequence fingerprint, which allows the identification of members of distantly related protein families. Like we can search for protein motifs and domains actually. And multiple sequence can help us to reveal biological facts about proteins. So first, multiple sequence will find out the fingerprints for us, like the conserved sequence and distantly related proteins. In different proteins, it can find out the conserved sequence for us, and those conserved sequence could be the fingerprints. And in multiple sequence alignment, it can also reveal the biological facts about the protein, like how protein functions has changed
or evolutionary pressure acting on a gene. So the evolutionary pressure, like how the protein evolve or a sequence evolve with time, so that can be revealed through multiple sequence alignment. So this is how multiple sequence alignment is important. And next is crucial for genome sequencing as well. So these are the three things which are important, in which for which multiple sequence are used, multiple sequence alignment is used. For genome sequencing, three things are important. Like random fragments of large molecules are sequenced, and those that overlap are found to be multiple sequence alignment program, found by a multiple sequence alignment program. So if we have overlapping sequences, we can align that. If we have a sequence like this, and this has a region of overlap with some another region, another sequence, and this has overlap region, so these two regions are overlapping. So how we can find the overlapping sequence, and that can be only possible through multiple sequence alignment. Is it clear? Yes, sir. Okay, and next is sequence may be found maybe from one strand of the DNA or from the other strand. So complement of each sequence must be compared. So if we have a sequence, if we have amplified a sequence, and that is double-stranded sequence, and if we do PCR, and after that PCR we sequence it and we get this sequence. So this can be like this one, or this can be like this one. So how we can know this is the sense strand or is the complementary strand? So by alignment, we can confirm the sequence as well. Like we have two sequence. One is a sense strand, and the other one is the anti-sense. That can be aligned as well. Is it clear? So so the complementary sequence can also be compared in multiple sequence alignment. And the third one is all of the overlapping pairs of sequence fragments must be assembled into large composite genome sequence. So previously, we have talked about sequencing. And sequencing in one go, we don't have the complete genome in only one strand. We will be having different strands, and we actually don't know which sequence is like the overlapping sequence, and which how the complete genome can be produced from small fragments. So if we align all those sequences, they can be assembled into whole complete genome. So from these assembly of small contacts, we can have a complete genome. Is it clear? So that can be aligned. Some of the sequences may be overlapping, like the whole sequence is overlapping, and some of them will be suffix prefix sequences, and that's it. We will be talking about this in detail later on in the coming slides. So this is how we can get the complete genome of a sequence. Okay, is it clear? So this is Gigi, please. सर वो फर्स्ट वाला और समझ नहीं है, फिंगरप्रिंट वाला बाकी समझ आया. ओके, फिंगरप्रिंट का ये मतलब है कि अगर हमारे पास कोई प्रोटीन फैमिली है, लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली है, और इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली में वी डोंट नो कि अगर हमारे पास इसमें कोई कंजर्व कोई लाइक डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन के डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि अगर कोई हम एक कॉमन रीजन एक ले लें, उससे हमें पता चल जाए, अगर वो हमारे पास एक सीक्वेंस में है तो हम कह सकते हैं कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन का सीक्वेंस है. ठीक है, बाकी तो चेंज होते जाएंगे ना, हो सकता है बाकी में म्यूटेशंस हो, चेंजेस आए, एक स्पेसिफिक रीजन होगा जिसमें कोई चेंजेस नहीं आते. ठीक है, that is conserved for that whole family of protein. So वो उस रीजन को लाइक हम लेंगे, उसको हम फिर फिंगरप्रिंट कहते हैं for, and that could be used for identification of distantly related protein family. तो ये सारे प्रोटीन्स जो हैं ये एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है, बट कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस इसमें इन सब में कॉमन है. सो उस कॉमन सीक्वेंस को हम फिंगरप्रिंट कहते हैं फॉर दैट सीक्वेंस. और इनको अगर
बायोलॉजी के टर्म में लें तो इनको मोटिव्स भी कहते हैं, ठीक है, कंजर्व डोमेन, कंजर्व मोटिव्स. वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डोमेन्स एंड मोटिव्स इन द लेटर slides. Is it clear? Okay, Yes, sir. sir. Okay, so moving further. Okay, to establish homology for phylogenetic analysis, sequence alignment is important. And to identify primers and probes to search for homologous sequences in other organisms. So to identify primers, to design primers, to design probes, multiple sequence alignment is also important. We will have a whole topic on primers designing and probe designing. We will be talking about these in detail in the later, like in the later lectures actually. ठीक है, phylogenetic analysis पे भी पूरा like we have a whole lecture on phylogenetic analysis. But the bottom line is, for phylogeny, for primer and probe designing, we will need multiple sequence alignment. So this is how multiple sequence alignment is important. So first of the thing, if we want to identify a fingerprint or conserve motif within a protein family, we can go for multiple sequence alignment. If we want to know biological facts or we want to know the evolutionary history of a protein, we go for multiple sequence alignment. For genome sequencing, for assembly, for overlapping sequences, for complementary region identification, go for multiple sequence alignment. If you want to have a phylogeny, go for multiple sequence alignment. If you want to design primers, probes, you go for multiple sequence alignment. Is it clear? Yes, sir. Yes, And this is how we can generate a multiple sequence alignment. So given a pairwise alignment, just add a third sequence and then the fourth and so on until all have been aligned. Does it work? So we have a pairwise alignment. We have two sequences, align them. The alignment will have certain deletions, certain insertions. So if we add a third sequence to align the two, and then a fourth sequence to align the three, and then a fifth sequence, and so on. So can we have a pairwise sequencing sequence alignment? So we have like here an example: taxon A, taxon B, and taxon C. So taxon A is AGC, AC, taxon B is AC, and taxon C is AG. So these are certain examples of two sequence alignment. On the left side, taxon A and B has pairwise aligned. So if you can see, A and C could be aligned. A and B could be aligned, and you can see A, G, A, C. So AC is aligned here in the taxon B. So you can see the taxon B is here. So AC can align here. Here, if we can align taxon A and C, so it can align like this one. And if we can align taxon B and C, so it can align like this one. So here, this is a substitution. The C and G is substituted. So here is a substitution, here is deletion, here is deletion, here is, you can see the insertion. The AG is insertion, the AC is insertion. So this is pairwise sequence alignment. If we go for pairwise sequence alignment, so it is not self-evident how these sequences are to be aligned together. Here are some possibilities. So there are no rule and there is no correct, like we cannot say this one is correct, this one is correct, or this one is correct, and this one is correct. So there are certain possibilities shown in red color, in blue, in green color, in blue color, and in black color. So these are different possibilities to align three sequences. So if we align these three sequences, this is one of the possibility. This is the second possibility. It can align like this one. It can align like this one. It can align like this one. So this is the different possibilities that can work in pairwise sequence, in multiple sequence alignment. And we can't say which one is correct unless we know
the history and we know the relationship between these taxon actually. Excuse me, sir. जी प्लीज बताएं। सर ये टैक्सन क्या है सर? टैक्सा जो है टैक्सा एनीथिंग वी ये टैक्सोनॉमी से निकला है, ठीक है। सो एनीथिंग वी क्लासिफाई इन अ टैक्सोनॉमिक क्लस्टरिंग। टैक्सोनॉमिक फैमिली में एक हम एक सीक्वेंस को रखते हैं, उसको हम टैक्सा कहते होते हैं, ठीक है। नेम इसका ए है, बी है, सी है, लेकिन ये टैक्सन ए, टैक्सन बी, टैक्सन सी कोई भी ये हो सकता है, लाइक ए बी सी, लाइक कोई भी, लाइक दिस कैन एनी इंडिविजुअल, ठीक है। सो टैक्सोनॉमी में फिर दो चीजें हैं, वन इज क्लासिफिकेशन एंड द अदर वन इज नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर इज हाउ टू नेम अ सीक्वेंस एंड क्लासिफिकेशन इज हाउ टू क्लासिफाई अ सीक्वेंस। ये डिफरेंट ग्रुप्स में हम किस तरह रखते होते हैं। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट टैक्सोनॉमी इन डिटेल, बट हियर जस्ट टू नेम अ सीक्वेंस और टैक्सन, सो ये इसको टैक्सोनॉमिक नेमिंग की जाती है इसकी, ठीक है। सो जेनेरिक एक टर्म यूज किया गया है ए बी सी। इज इट क्लियर अप टिल नाउ? Yes, sir. Okay, so proceeding further. So in pairwise alignment, one has two-dimensional matrix with sequence on each axis. So one is x-axis, एक sequence को हम x-axis में लिख लेते हैं, दूसरे को हम y-axis पे लिखते हैं, ठीक है। And the number of operations required to locate the best path through the matrix is approximately proportional to the product of the length of the two sequences. Wait for a while. So here, if we have two sequences and we want to have pairwise sequence alignment, so basically what could be done? So what could be done? One sequence could be written on the x-axis, the other sequence could be written on the y-axis. And it could be like one sequence is written like in on the y-axis, the other sequence will be written in x-axis, and this will be taxon A, and this will be taxon B, and the sequence length will be corresponding to this thing. So this will represent the sequence length, and like this is like A C T T G. This is one sequence, and here will be another sequence. T. So this is another sequence, and we can compare the two, and it will give us a two-dimensional matrix, and it will like so this is how a two sequence alignment can be done. And there are actually different tools. We will be different algorithms for local and for global alignment. We will be talking about these in detail. Okay, so for multiple sequence alignment, this was for
two sequence alignment, and that will be two-dimensional. So this two-dimensional is important. That will be two-dimensional. For multiple sequence alignment, the dimensions will be more. Like if that is three sequences, so that will be three-dimensional. If that is 10 sequences, so that will be 10-dimensional. So a possible general method would be to extend the pairwise alignment method into a simultaneously n-wise alignment. So if we have n number of sequences using a complete dynamical programming algorithm in n dimensions, so if there are n number of sequences, so n dimensions will be there. So algorithmically, it is not difficult to do. So physically it's difficult, but algorithmically, it is not difficult to do. And but what about the execution time? Execution time matters because it will take more time, it will be time consuming and software intensive actually. And progressive global alignment, so now we will be talking about progressive and iterative alignment versus global and local alignment. So what is meant by progressive global? You people already know about global and local alignment, isn't it? We have talked about that previously. Yes, sir. Okay, that's great. That's great. So now what is progressive global alignment? Progressive global alignment of the sequences starting with an alignment of the most alike sequences and then building an alignment by adding more sequences. So if we have three sequences and if we have three sequences, so what will be the progressive, how the progressive global alignment will work? So for progressive global alignment, the alignment will be like, first it will align the most alike sequences. It will align the most alike sequences first. So this is a pairwise sequence alignment, and then we'll add the third sequence to align. So it will like this. So this one is now known as this type of alignment is known as what? This will be known as progressive sequence alignment. Anybody who could explain this now? Kaleem is here? Yes, sir. जी कलीमुल्लाह, प्लीज ये एक्सप्लेन करें क्या है ये? सर इसमें ये है कि अगर हमारे पास सीक्वेंस है कोई किसी टाइप के अगर हैं तो हम उनको फिर के प्रोग्रेस समझो एक की तरतीब से हम अलाइनमेंट कर रहे हैं. अगर हमारे पास रैंडम पड़े हैं तो उनकी जब एक तरतीब से अलाइनमेंट होगी तो उसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव ग्लोबल अलाइनमेंट. तरतीब से क्या मतलब है सर? इधर सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस से एक जैसा सीक्वेंस है. हाँ, मोस्ट अलाइक सीक्वेंसेस जो सिमिलर सीक्वेंसेस होंगे वो पहले अलाइन हो जाएंगे और Yes, फिर sir. जो डिस्टेंट सीक्वेंसेस हैं लाइक डिसिमिलर सीक्वेंसेस हैं वो बाद में अलाइन होते जाएंगे, मींस वो ऐड Yes, होते जाएंगे एंड इस तरह मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट बनेगा. okay, ठीक है, sir. फातिमा इज देयर? फातिमा रमजान. Okay, so moving further, Yes, iterative. sir. Okay, इसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है फातिमा. Okay, iterative methods Okay, जो sir. हैं वो क्या होंगे? That make an initial alignment of a group of sequences and then revise the alignment to achieve a better result. इसमें क्या होगा? इसमें alike sequences जो हैं वो पहले align नहीं किए जाएंगे. इसमें सारे sequences पहले align करके फिर जो है उसको re-align किया जाएगा. फिर like एक सीक्वेंस है, ये हमारे पास सीक्वेंसेस हैं, सो इसने पहले अलाइन कर देने हैं सारे सीक्वेंसेस और उसके बाद जो है वो like if it will align these sequences and the algorithm will realign the all of the sequences again to get better results.
इसको दोबारा ऐलान किया जाएगा ताकि बेटर रिजल्ट हमारे पास आ जाएं। सो अगर सिमिलर सीक्वेंसेस पहले किया जाए और डिस्टेंट सीक्वेंसेस बाद में किए जाएं तो उसके रिजल्ट बेहतर आते हैं। सो इटरेटिव जो है वो इस वजह से कि हो सकता है कोई सीक्वेंस दूसरे में कॉमन हो जो हमें डिस्टिंक्ट नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो ज्यादा रिलेटेड हो। सो इटरेटिव मेथड्स जो है वो यूज किए जाते हैं टू गेट द बेटर रिजल्ट्स ऑफ द अलाइनमेंट, to have more score, a maximum score of an alignment. And alignment based on locally conserved patterns found in the same order in the sequence. So ये असल में alignment के basis है कि अगर locally conserved pattern है सो वो पैटर्न जो है वो ये अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी भी है, अलाइनमेंट का ड्रॉबैक भी है। इसको प्लीज समझ लें कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है और दूसरे सीक्वेंस में हमारे पास ये एक पैटर्न है जो इसकी तरह है और यहाँ पे एक और पैटर्न है, ठीक है, और ये सीक्वेंस, द सीक्वेंस इज लाइक दिस, ठीक है, और सो ये हमारे पास इसकी अलाइनमेंट इसी तरह कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला सीक्वेंस यहां पे मौजूद हो और ये वाला यहां पे मौजूद हो, सो ये अलाइनमेंट उस तरह नहीं कर सकेगा जिस तरह होना चाहिए। सो इसके बेसिस क्या है कि जो लोकली कंजर्व पैटर्न्स हैं, मींस के जो मोटिव्स हैं लोकली कंजर्व, दे शुड बी इन द सेम ऑर्डर, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, सीक्वेंस सेम होना चाहिए, लाइक ये इस ऑर्डर से हो। अगर ये यहाँ पे मौजूद है और ये वहां पे मौजूद है तो ये प्रॉब्लम करेगा अलाइनमेंट में। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये लास्ट में इस बात को समझ नहीं आई कि अगर मोटिव्स हैं तो उनका ऑर्डर मतलब डिस्टर्ब कर देगा, ये इस सेम ऑर्डर में रहेगा। Okay, wait. If I could draw, if I have a sequence, this sequence, and like हमने दो सीक्वेंस को अलाइन करना है और वो जो है वो सीक्वेंस इस तरह का है, ठीक है, और दूसरा सीक्वेंस हमारे पास है वो इस तरह का है। ठीक है, सो ये जो है ये प्रॉपर अलाइन नहीं होगा, ये यहां पे सिर्फ अलाइन हो जाएगा, लाइक इट विल अलाइन लाइक हियर, ये अलाइनमेंट इसकी यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगी, बिकॉज जो लोकली कंजर्व रीजन्स हैं वो उनका ऑर्डर ठीक नहीं है, ऑर्डर डिफरेंट है। समझ आ रही है? तो यहाँ पे डिलीशंस और इंसर्जन बहुत ज्यादा होंगे, बजाय इसके कि ये उसके ऑर्डर को चेंज कर लें, तो ये इस तरह नहीं होगा, ठीक तो है। वो इस तरह के अगर दो सीक्वेंस में मोटिव्स आमने सामने आ जाते, सेम ऑर्डर में आ जाते, तो उनको वो अलाइन कर देगा, लेकिन जिनके हाँ ऑर्डर आगे रैंडम होंगे उनको हाँ, नहीं करेगा। आमने सामने भी आ जाए, या अगर वो लाइक एक सीक्वेंस है हमारे पास, वो वी हैव दिस सीक्वेंस एंड वेट आई कुड लेट मी ड्रॉ दैट। अगर हमारे पास ये एक सीक्वेंस है और दूसरा सीक्वेंस हमारे पास इस तरह है और यहाँ पे दरमियान में कोई और रीजन है, दिस रीजन, और फिर उसके बाद अगेन दिस रीजन, ठीक है। सो ये अब अलाइन किस तरह करेगा, ये इसकी अलाइनमेंट चेक दैट द हाउ कुड बी द अलाइनमेंट। इस सीक्वेंस की अलाइनमेंट जो है वो इस तरह होगी कि पहले हमारे पास वी विल गेट द रेड सीक्वेंस विल बी अलाइंड वेल, ठीक है। उसके बाद द पिंक सीक्वेंस, दिस विल बी द पिंक सीक्वेंस, एंड आफ्टर दैट वी हैव this sequence, the green sequence, this one, and this one is there, ठीक है। सो और यहां पे क्या देगा, यहां पे गैप दे देगा, डिलीशन, ठीक है। सो ये प्रॉपर अलाइन कर देगा, ये अलाइन तो हो जाएंगे,
लेकिन ये इस तरह होंगे, ये अलाइन हो जाएंगे, ये प्रॉपर 100% अलाइन हो जाएगा बिकॉज दे हैव द सेम सीक्वेंस, दे आर द सेम सीक्वेंस। ये भी प्रॉपर 100% हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। दरमियान में जो है ये डिलीशन होगी, दिस वन, इस सीक्वेंस में डिलीशन होगी, तो इसका मतलब है कि एवोल्यूशन में यहाँ पे इंसर्जन हुई है इस सीक्वेंस में, और इस सीक्वेंस से डिलीशन हो गई है, तो इस तरह बन गया है। ये एक सीक्वेंस, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक सीक्वेंस दूसरे से बना है एवोल्यूशन के दौरान। ठीक है, सो इसमें डिलीशन हुई है, इसमें इंसर्जन हुई है, बाकी सारा कॉमन है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई आपको रीजन नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसको जब अलाइन करते हैं तो इस तरह बन जाता है। समझ आ रही है? इज इट क्लियर? यस सर। ये जो है ये लोकली कंजर्व, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो इसका ये, हाँ इसका ये मतलब हुआ कि जो ऑर्डर है मोटिव्स का, जो लोकली कंजर्व रीजन है, वो सेम ऑर्डर में होने चाहिए, अदरवाइज अलाइनमेंट नहीं होना। यहाँ पे देखें कंजर्व रीजन तो दोनों में सेम है, लेकिन वो जो है वो पैटर्न या ऑर्डर सेम नहीं है, उसका ऑर्डर सेम नहीं है, ये इसका और इसका। ठीक है, सो ये अलाइन नहीं, आप जस्ट ट्राई कर लें सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस के साथ टू सीक्वेंस अलाइनमेंट कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, शुड वी गो फर्दर? एक्सक्यूज मी सर, जी जी प्लीज। सर अगर यही मतलब यही वाला अलाइनमेंट जो भी नीचे आपने समझाई है, अगर सर ये ग्लोबल में आ जाए तो फिर किस तरह से इसकी अलाइनमेंट होगी? ये ग्लोबल ही है, एंड टू एंड ही है, ये ग्लोबल ही है। तो सर ये लोकल ही है? नहीं नहीं, लोकली कंजर्व पैटर्न्स होंगे इसमें, वो ये अलाइनमेंट टू Alignment एंड है global ना। हाँ अलाइनमेंट ग्लोबल होगी, एंड टू एंड है ये। ओके सर। ठीक है, शुड वी गो फर्दर? यस सर। यस सर। ओके, एंड नेक्स्ट इज ऑप्टिमल वर्सेस करेक्ट अलाइनमेंट। So alignment का issue ये है कि we don't know, we can't say this alignment is correct. For a given group of sequences, there is no single correct alignment. And only an alignment that is optimal according to some set of calculations. So we can say this is an optimal alignment. Never ever say this is a correct alignment. Do use the word optimal. You can say this is optimal alignment according to a set of rules. Like अगर हम दो सीक्वेंसेस को अलाइन कर रहे हैं, एक ह्यूमन का सीक्वेंस है और दूसरा जो है वो मंकी का है, और तीसरा जो है रेप्टाइल्स का है। सो अगर अलाइनमेंट में मंकी और ह्यूमन का सीक्वेंस जो है, या अलाइनमेंट में वो करीब आ जाए वो सीक्वेंसेस, सो हम कह सकते हैं कि दिस वन इज द ऑप्टिमल अलाइनमेंट। रेप्टाइल का जो है वो ह्यूमन से उसका जो एवोल्यूशनरी डिस्टेंस है वो ज्यादा है, सो द रेप्टाइल सीक्वेंस presumably not be comparable to the human sequence. ठीक है, so this that will be distinct as compared to the monkey sequence to the human. ठीक है, so उस केस में हम उस alignment को जिसमें monkey और human करीब करीब हो, so that can be an optimal alignment because we have the evolutionary evidence of that. अगर एवोल्यूशनरी एविडेंस नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन अगर बेस, अच्छा फ्यूचर में हमें पता चल जाए कि रेप्टाइल्स जो हैं वो ह्यूमन के ज्यादा रिलेटिव हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन, सो वहां पे फिर वो जो पुरानी वाली अलाइनमेंट जिसको हम ऑप्टिमल कह रहे थे, दैट इज नॉट नाउ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नाउ, सो द अदर वन विल बी ओके। ठीक है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज इन डिटेल इन फाइलोजेनी एक्चुअली। ठीक है, बट फॉर नाउ कीप try to understand the correct alignment and the optimal alignment, the difference between the two. So try to use the word correct alignment, optimal alignment instead of correct alignment. And next is, this is partly due to the complexity of the problem. We don't know actually the sequence, like we have a sequence, but we cannot drag the maximum of the information from a sequence because many things we don't know about the basis of those sequences. And the limitation of scoring system, because these scoring systems are man-made systems, but therefore we cannot rely more on them, and our limited understanding of life and evolution. So due to these 3 points, we will say this alignment is optimal. And next is determining what
alignment is best for a given set of sequences is really up to the judgment of the investigator. So the scientist or the investigator only, and all these things depends on the investigator, how he or she judges actually the alignment and the results. Actually, success of the alignment will depend on the similarity of the sequences. If sequence variation is greater, it will be difficult to find an optimal alignment. So sequence variation, if that is less, we can say this one is optimal alignment. But if the variation between the sequences is more, so optimal sequence is difficult to find out. यहां तक समझ आ गई है? Who will explain? सर लास्ट वाली बात बता दें। लास्ट बात ये है कि अगर हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं, तो दो सीक्वेंसेस में अगर डिफरेंसेस कम हैं, सो हमारे पास अगर बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं और उनमें सीक्वेंस उसमें जो है वो डिफरेंसेस कम है, तो उसमें से हमें ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालना आसान है। लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंसेस ज्यादा है, एक सीक्वेंस जो है वो वायरस का है, दूसरा जो है फंगस का है, तीसरा जो है बैक्टीरिया का है, चौथा जो है वो ह्यूमन का है, सो इन सारे सीक्वेंसेस में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होंगे। उस केस में अलाइनमेंट हम ये नहीं कह सकते कि दिस अलाइनमेंट इज द ऑप्टिमल, दिस इज गुड। सो उसमें क्योंकि वेरिएशन बहुत ज्यादा है, स्कोर बहुत कम आना है उसमें। ठीक है? यस सर। ठीक हो गया। हु विल एक्सप्लेन? फरीन? यस सर। फरीन जी जी प्लीज अगर आप एक्सप्लेन कर दें इसको। जी सर इसमें ये बताया कि अगर हम कोई अलाइनमेंट जो है उनके सीक्वेंसेस निकाल रहे हैं तो हम उनको करेक्ट नहीं कहेंगे, हम उनको बल्कि ऑप्टिमल कहेंगे। जिस तरह से आपने एग्जांपल दी है ह्यूमन की, रेप्टाइल्स की और मंकीज की। मंकीज का हमने इसलिए उसको ऑप्टिमल कहेंगे क्योंकि उनकी जो है वो हमसे ज़्यादा मतलब करीब है उनकी जीनोम जो है। और सही है इस वजह से क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम और लिमिटेशन ऑफ स्कोरिंग सिस्टम और हमारी अंडरस्टैंडिंग लाइफ और एवोल्यूशन की। और सही ये डिपेंड करता है कि जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो किस तरीके से इन सीक्वेंसेस को जज करेगा। और सर इसके बाद आपने ये बताया कि वेरिएशन, अच्छा अगर हमें जो सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है, जिस तरह अगर ह्यूमन और रेप्टाइल्स का देखें तो उनके दरमियान ऑप्टिमल अलाइनमेंट जो है वो ढूंढना ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक हो गया। ठीक है, फातिमा? यस सर। जी प्लीज एक्सप्लेन करें, जो अगर फॉर इंस्टेंस इसके साथ एडिशन हो। इसमें आपने बताया कि अगर दो ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस एक जैसा है उनके एंसेस्टर से, तो उसको हम ऑप्टिमल कहेंगे क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी होगी। जी जी। और कोई भी सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं होता है क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में थोड़ी सी डिफरेंशिएशन आ जाती है। और ये हमारे जो भी साइंटिस्ट है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह सीक्वेंस को अलाइन करते हैं और उनकी सिमिलैरिटीज को किस तरह देखते हैं, कि सिमिलैरिटीज को देखते हैं या उसके डिफरेंसेस को ज्यादा देखते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है। सो मूविंग फर्दर, what's the difference between a domain and a motif? So motifs are structure characteristics. So अगर हम structure features के बारे में बात कर रहे हैं, so we will call that thing as a motif. कोई भी sequence में हम structure features बता रहे हैं, so that will be motif. And domain is our functional region, are not necessarily related to size. हम size के बेस में like हमारे concept होते हैं naturally, जो हम सोच रहे होते हैं कि motif जो है वो small region को कहेंगे, domain को large region कहेंगे। ये इस तरह नहीं है। Motif is with the context of structure, domain is the context of function. अगर हम function की बात कर रहे हैं, किसी specific motif के function की बात कर रहे हैं, so we are referring to the domain. अगर हम किसी specific sequence की बात कर रहे हैं, तो we are referring to the motif. And in a protein, a particular arrangement of amino acid or secondary structure that can be found in other proteins, not necessarily related, can be called a motif. So दो या दो से ज्यादा सीक्वेंसेस में अगर कोई अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड या सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और वो कॉमन है,
डिफरेंट प्रोटीन्स में, लाइक एक इंसुलिन प्रोटीन है, दूसरा मेलानिन पिगमेंट है, दोनों में कोई कॉमन रीजन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसकी उसकी अरेंजमेंट सेम है, स्ट्रक्चर उसका सेम है, प्रोटीन स्ट्रक्चर सेम है, या वो सीक्वेंस सेम है, सो उसको हम क्या कहेंगे, मोटिफ कहेंगे, ठीक है। एंड इफ दैट पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज रिलेटेड टू सम फंक्शन, DNA और प्रोटीन बाइंडिंग प्रॉपर्टी है या कैटालिटिक एक्टिविटी है, then it is called domain. Now it's time for the function, so we are referring to the function of that specific sequence or that specific arrangement, so then that will be called as domain. And for example, leucine zipper motif is usually found as a part of dimerization domain. So dimer jab banenge, that has a dimerization domain in many transcription factors. So now we are referring to the function. So first one was motif, and now it's time for to call it as a domain, because due to dimerization in transcription factors. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, who will explain? Yes, sir. मायदा? सर मैं बताऊं? कलीम नहीं, कलीम आप एक दफा बता चुके हैं ना, अब कोई और बताएगा। मायदा, मायदा इज देयर? रबिया, रबिया, रबिया मुनीर। सर मोटिव कहते हैं जब हम किसी सीक्वेंस की स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं, और डोमेन जब हम उसके फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स को या फंक्शनल रीजन को स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं डोमेन। लेकिन अगर पर्टिकुलरली किसी प्रोटीन में हम उसके अरेंजमेंट, अमाइनो एसिड के अरेंजमेंट किसी प्रोटीन में अगर सेम हो, दो या दो से ज़्यादा प्रोटीन में अगर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड सेम है या उनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम आ रहा है, जिसमें अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट सेम आ रही है, तो उसे हम मोटिव कहेंगे। लेकिन डोमेन में उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का अगर फंक्शन सेम आ रहा है तो हम उसे डोमेन कहेंगे। एग्जैक्टली सो और फिर एग्जांपल में आपने ल्यूसीन जिपर मोटिव का बताया कि वो ल्यूसीन जिपर जो है वो एक मोटिव है, लेकिन जब वो डाइमराइजेशन कर रहा होता है, मतलब वो अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन में, तो फिर उसको कहेंगे डोमेन। एग्जैक्टली समझ आ गई क्लास? यस सर। इट्स क्लियर? ओके, सो दैट्स गुड। सो हिजाब समझ आ रही है? यस सर। नेक्स्ट आपने एक्सप्लेन करना है, एंड आयशा मसूद आपने भी, ठीक है। सो moving further, what is the difference between identical and similar? It's too much important. Identical identity और similarity में फर्क समझ लें। This is important from this point onward, क्योंकि आगे जाके हम ये दो वर्ड बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। So the simplest way to assess the relationship between two amino acid sequences would be to count both the number of identical and similar amino acid through sequence alignment. So अगर हमने दो amino acid sequences के बारे में बताना है कि ये जो है इनमें relationship है इन दो sequences में, so हमने दो word use करने, they have identical amino acid and they have similar amino acid. What does that mean? It means that similar residue have similar chemical characteristics like positively charged lysine, arginine, hydrophobic residues like leucine, valine. So if two sequences have amino acid substituted with amino acid that have same properties, like lysine has been substituted with arginine, both are positively charged, so we will call as similar amino acids. लेकिन अगर पॉजिटिवली चार्ज जो है वो हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू से एक्सचेंज हो जाए, म्यूटेट हो जाए, चेंज हो जाए या एक्सचेंज हो जाए, सो या सब्स्टिट्यूट हो जाए, सो दैट विल बी कॉल्ड एज डिसिमिलर, वो सिमिलर नहीं होगा। सो अमीनो एसिड विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अगर चेंज हो जाए किसी और अमीनो एसिड में प्रॉपर्टी सेम हो, तो उसको हम फिर सिमिलर अमीनो एसिड्स कहेंगे। लेकिन so leucine and valine will be equally tolerated in a hydrophobic core. The same applies in lysine and arginine, which
usually locate on the surface and primarily interact with solvent and the acidic side chain of glutamic acid and aspartic acid. अब ये देखें, इस चीज को पहले समझ लें. This is important in the context of biological significance. If we have a sequence and if we if this is a lipid bilayer membrane and we have a receptor protein. Receptor protein क्या होता है, इस तरह passes होते हैं ना, multiple passes होते हैं, ठीक है. So ये lipid bilayer membrane जो है, this will have charged, ये charged होगा outer surfaces का, ठीक है, और ये चार्ज होगा और इसका इनर जो है वो हाइड्रोफोबिक कोर होगा. ये this one will be hydrophobic core. So like begets like. अब ये प्रोटीन जो मल्टीपल पासेस बना रहा है, ठीक है, and the receptor protein, it will have two types of residues, two types of regions. This one will be hydrophobic region. ये हाइड्रोफोबिक रीजन होगा क्योंकि इसने हाइड्रोफोबिक रीजन के अंदर रहना है, ठीक है. सो दिस विल बी हाइड्रोफोबिक मोटिव्स, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक मोटिव्स होंगे. और ये रीजन जो है, जो आउटसाइड है, दे हैव टू इंटरेक्ट विद वाटर. सो these motifs will be हाइड्रोफिलिक. सो इसका ये मतलब हुआ कि इसमें जो रेजिड्यूज होंगे जो जिससे ये प्रोटीन बना है, ये क्या होगा, ये अमीनो एसिड जो होंगे ये हाइड्रोफोबिक होंगे, ये सारे अंदर वाले, और ये मोटिव्स जो हैं ये हाइड्रोफिलिक होंगे. तो इसका ये मतलब हुआ कि इफ वी हैव दिस रिसेप्टर प्रोटीन, अगर ये रिसेप्टर प्रोटीन हमारे पास है, सो इसका ये रीजन जो है, दिस विल बी हाइड्रोफोबिक, दिस रीजन विल बी हाइड्रोफोबिक, दिस रीजन विल बी हाइड्रोफोबिक. अगर ये हाइड्रोफोबिक होंगे तो ये इस तरह मल्टीपल पासेस बनाएंगे. इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई म्यूटेशन हो जाए और यहां से हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू जो है वो हाइड्रोफिलिक बन जाए, ये रेजिड्यू यहां पे हाइड्रोफिलिक बन जाए, सो अब ये जो है ये अंदर नहीं रह सकता. ये जो है ये इट हैज टू मूव आउट ऑफ दिस बायोलिपिड मेम्ब्रेन. सो अब ये रिसेप्टर जो है इसका स्ट्रक्चर खराब हो गया ड्यू टू द म्यूटेशन, ठीक है. सो दैट विल मीन कि अगर हाइड्रोफोबिक जो है हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो जाए, it will have drastic effect on the function of the protein. Therefore, it is important to know either a mutation or a change in a protein is similar or dissimilar. अगर similar है तो इसका मतलब है कि प्रोटीन के फंक्शन पे चेंज नहीं होना आना ज्यादा. समझ आ रही है? Am I clear? Yes, sir. So this is why this is important to know either the change is similar or not similar. And next is the identical. This was what similar is. But for identical is the exact amino acid or exact nucleotide. Like दो amino acid जो है वो same है. Like दो sequences में दो amino acids same है, like valine and valine. So that will be identical. But similar is with the context of properties. उनके properties same हैं. दो different amino acid हैं लेकिन उनके properties same हैं. Like leucine and valine are different amino acid, but the properties are same. They both are hydrophobic. Therefore, they will be called as similar amino acids. ठीक है. एंड आइडेनिकल कब होंगे कि वो दोनों सेम अमीनो एसिड होंगे. सेम अमीनो एसिड जब होंगे फिर उसको हम आइडेनिकल कहेंगे. सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट सिमिलर एंड आइडेनिकल इज एक्चुअली. एंड नेक्स्ट इज on the other hand, substitution of valine by arginine may have a dramatic effect and may destabilize the and even denature the protein. ठीक है. सो अगर आर्जिनिन जो है वो वेलिन से लाइक रिप्लेस हो जाए, सो दैट विल हैव अ ड्रास्टिक इफेक्ट बिकॉज वन इज पॉजिटिवली चार्ज, द अदर वन इज हाइड्रोफोबिक. ठीक है. सो इट विल हैव अ ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन द प्रोटीन फंक्शन एक्चुअली. हु विल एक्सप्लेन? सर अभी आपने बोला है कि ये ल्यूसीन एंड वैलिन और लाइसिन एंड आर्जिनिन ये सिमिलर इनके मतलब फंक्शंस हैं, तो फिर ड्रास्टिक इफेक्ट कैसे हो सकता है?
आपने सिमिलर में यही बोला है ना, नो चेंज इन प्रोटीन फंक्शन। एग्जैक्टली हाँ, ये असल में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सिमिलर है तो ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर सिमिलर नहीं है तो दैट विल हैव अ ड्रास्टिक इफेक्ट। लाइक आर्जिनिन कन्वर्ट हो जाए वेलिन में, या वेलिन जो है वो कन्वर्ट हो जाए आर्जिनिन में। वन इज पॉजिटिवली चार्ज, द अदर वन इज हाइड्रोफोबिक। सो अगर प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, दैट डजंट रिमेन नाउ सिमिलर। ठीक है, तो सिमिलर नहीं रहेंगे, इस वजह से प्रोटीन के फंक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि द स्ट्रक्चर इज चेंज नाउ। इज इट क्लियर? Yes, sir. So who will explain hijab? Your number. आपने explain करना था ना? जी सर। जी, अब बताएं। सिमिलर में आपने यही बताया कि इनके जो रेजिड्यूज होते हैं वो सेम होते हैं, उनके मतलब केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उनके सेम होते हैं। और अगर एक अमाइनो एसिड जो है विद सिमिलर प्रॉपर्टीज हों तो वो मतलब आपस में चेंज हो सकते हैं, और उसकी वजह से प्रोटीन के फंक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होता। और याद रखिए, आइडेंटिकल में आपने बताया कि उसके अमाइनो एसिड्स जो दोनों होते हैं वो बिल्कुल ही आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सेम होते हैं। लाइक ल्यूसीन है तो ल्यूसीन ही होगा, उसके साथ वैलिन है तो वैलिन ही होगा। exactly. Okay, and who will explain next? कौन explain करेगा? Kinza is there, Kinza? Umar, you there? Umar Rashid. Yes, sir. जी, explain करें slide को इसको। Yes, sir. जी। जी उमर बताएं, वेट कर रहा हूँ मैं। उसामा है? सर ये जो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है सिमिलर रेजिड्यूज हैव सिमिलर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सर इसमें ये इसके बारे में बताया हुआ है कि लाइसिन और आर्जिनिन की सेम होंगी और ल्यूसीन एंड वैलिन की सेम होंगी। एग्जैक्टली जी। ज़ईम है, ज़ईम इज हियर। Yes, sir. जी ज़ईम, ये तो बता दें स्लाइड के बारे में, क्या है ये? कम ऑन बताएं। जी उमर, अब बता दें। उमर, आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, यू सर मैं बताऊं अभी? जी बताएं प्लीज। सर आपकी आवाज डिस्टॉर्टेड आ रही है। चलें, ठीक है। असल में आपकी तरफ नेट का फिर इशू होगा। अच्छा, ओके, सो मूविंग फर्दर, सो प्रोवाइडेड आपको अगर लेफ्ट राइट साइड पे on the top, if you can see the diagram, this is there are two sequences.
and these two sequences are aligned. ये दो sequence align किए गए हैं. If you can see G with G, ये दो protein sequences हैं, and they are aligned G with G, C with C, and this is the conserved sequence now. This one will be the conserved sequence. Wait for a while. Okay, so this will be the consensus sequence. The third one is the consensus sequence. These two sequences were aligned and we get the third sequence, the consensus sequence. Now G has been aligned with G, we get the G. C is being aligned with C and we get C. P is with P and we get P. Y is with V and that has been denoted with X, and S with G substituted with G, and that was denoted as X. Similarly, there is a deletion in this sequence, and that is denoted by a deletion. And similarly, S and D with an X, and similarly, this is identical. This is identical, and now these may be similar or dissimilar. So now, if we only go for identical sequences, so we have only 1, 2, 3, and 4 identities in these two sequences if we align them. So provided is a CLUSTAL W generated sequence alignment using EBI server, European Bioinformatics Institute, and the amino acid residues which are identical in the two sequences are marked in the third row by their name GCP and P. So they are identical, GCP and P. Now they are identical, while the position of those which are different are marked X. One of the residues, a cysteine, in the second sequence does not seem to have a corresponding mate in the first and is marked by a dash. So the percentage identity is simply 4 by 12. So these are total of 12 residues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. So 12 residues are there, and only 4 are identicals. So 4 by 12, or it will mean 30%. And the score of the alignment can be assessed by a simple expression. Score is equal to number of matches minus the number of mismatches, means the 4 minus 12 is equal to minus 8. So this 12 minus 8 will be the score. So it means score is too much less. So this is not related. They are not related sequences because the score is too much low. And next to this is everything looks nice except that to maximize the number of matches, a gap is introduced marked by a dash in the first sequence. Who will explain? सर ये X वाला explain कर दीजिए. ये X इस तरह है कि अगर ये आइडेंटिकल नहीं है तो इन्होंने यहाँ पे X ऐड कर दिया है कि ये आइडेंटिकल नहीं है. ठीक है. ओके ये दो सीक्वेंस आइडेंटिकल नहीं. जी फातिमा. सर ये फर्स्ट वाले सीक्वेंस में तो मतलब मैच नहीं हो रहा सेकंड वाले से, तो वहां पे एक्स नहीं आया. कहाँ पे? सर ये फर्स्ट में जो जीसीपी के बाद जो है वो मैच नहीं ना कर रहे. हाँ, जैसे लास्ट वाले मैच नहीं कर रहे हैं दरमियान वाले से, तो वहां पे एक्स है. हाँ, तो वहां पे क्यों नहीं है? कहाँ पे एक्स नहीं है? ये जो VS जो है और YG. जी सर, जी जी. तो नीचे एक्स है ना, नीचे लिखा हुआ एक्स. सर मतलब ये ऊपर वाले सीक्वेंस में भी तो ये इससे मैच नहीं ना कर रहा सेकंड वाले से, तो वहां पर भी एक्स नहीं आना चाहिए. मैं आपकी बात नहीं समझा. कहाँ पे एक्स आना चाहिए? वो मैं बताऊं, वो कंफ्यूज है कि सिर्फ फर्स्ट जो ऊपर वाले दो हैं वो सीक्वेंस है और जो थर्ड रो है वो रिजल्ट है. हाँ एग्जैक्टली. दिस इज कंसेंसस सीक्वेंस. ये उसका रिजल्ट है थर्ड वन. यस सर, गॉट इट. हाँ ठीक है. ओके, एंड हु विल एक्सप्लेन? ये स्लाइड कौन एक्सप्लेन करेगा? सर कैन आई
जी जी प्लीज कैन आई? करें। जी जी सर इसमें आपने जैसे ये बताया कि जो सीक्वेंसेस मैच कर रहे हैं लाइक जीसीपी, वो सब आइडेंटिकल होंगे, और जो मैच नहीं कर रहे हैं रिजल्ट्स में वो हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, और जो सीक्वेंस मिस है यहाँ पर है ही नहीं, उसकी जगह पर डैश आ रहा है 10। तो बिल्कुल ठीक है। हमारे आउट ऑफ 12 में से 4 जो है सीक्वेंस वो मैच कर रहे हैं, तो हमारा मतलब जो है 30% रिजल्ट जो है वो आइडेंटिकल है। बाकी हमने स्कोर मतलब निकाला है इस फार्मूला से, स्कोरिंग वाले फार्मूला से जस्ट। ठीक हो गया, ठीक है। So moving further is in the multiple sequence alignment scoring scheme, a penalty is subtracted from each gap introduced into the alignment because the gap increases uncertainty of an into an alignment. Actually नेचर में क्या होता है, नेचर में गैप्स तो नहीं होते ना, लेकिन अलाइनमेंट के लिए हमें गैप्स ऐड करने पड़ते हैं। सो गैप्स के ऐड करने से हमने उस स्कोरिंग सिस्टम में पेनल्टी ऐड करनी है, ताकि हमें जिस सीक्वेंस में गैप ना हो, जिन अलाइनमेंट्स में उसका स्कोर ज्यादा आए, और जिसमें गैप आए तो उसका स्कोर कम आए, ताकि हमें थोड़ा सा उसको क्लियर हो कि गैप्स लाइक गैप्स शुड बी पेनलाइज्ड, उसकी पेनल्टी होनी चाहिए। The gap penalty is used to help decide whether or not to accept a gap or insertion of an alignment. So this will the gap penalty which will decide either there should be a gap or there should not be a gap there. There should be a substitution instead. So biologically, it should be in general be easier for a sequence to accept a different residue in a position rather than having parts of the sequence chopped away or inserted. Gaps insertion should therefore be more rare than point mutations. So point mutations are common, gaps and insertions are rare if we compare both of them. So in general, the lower the gapping penalty, the more gaps and more identical identities are detected, but this should be considered in relation with biological significance. Is it clear? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर एक फरीन। बात समझ नहीं आई सर, एक गैप पेनल्टी जो है वो हम कैसे डाल रहे हैं? डैशेस डाल के उन अलाइनमेंट्स में? हाँ, डैशेस अगर आ जाए अलाइनमेंट में, लाइक आप अंदाजा लगा लें, अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है एंड दैट इज ATC है, ATCG, ठीक है। दूसरा सीक्वेंस है हमारे पास ATG है। इन दो सीक्वेंसेस को हमने अलाइन किस तरह करना है देख लें। AT और फिर CG हम लिख देंगे। उसका दूसरा सीक्वेंस अगर ये हम अलाइनमेंट में देख लें तो अलाइनमेंट विल बी लाइक AT फिर गैप और फिर G। सो दिस कुड बी अ बेटर अलाइनमेंट। इज इट? सर ये बात समझ नहीं आई है, वो कह रहे कि लोअर द गैपिंग नहीं पेनल्टी। पहले ये समझ लेना कि तो हम ये तो गैप्स क्यों डालते हैं। इसकी ये समझ आ गई समझ ना कि गैप्स क्यों डालते हैं। अब यस सर। नेचर में गैप्स नहीं होते, लाइक सीक्वेंस जो है वो गैप्स के बगैर होता है, ठीक है। बहुत कम होते हैं कि लाइक गैप्स हों, ठीक है। सो उसके लिए हम कुछ पेनल्टी डालते हैं। अगर हमने इसको अलाइन कर दिया है और गैप्स को हम पेनलाइज नहीं करेंगे तो इसकी 100% आइडेंटिटीज आ जानी है, ठीक है। हमें स्कोर हमारे पास ज्यादा आ जाएगा, हमें गैप का पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम गैप की इसकी अगर फॉर इंस्टेंस इसकी 3 वैल्यू आ गई, like same sequence is 1 1 or 1, so that is 3 by 4 total number of जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो 4 है। लेकिन अगर मैं पेनल्टी डालता हूं, ठीक है, अगर गैप आ जाए सो आई पेनलाइज दैट विद -1, ठीक है। सो फिर क्या होगा, 3 -1 डिवाइड बाय 4 तो क्या आएगा, दैट विल बी 2 by 4। तो 2 by 4 अगर मैं पेनल्टी डालूंगा गैप की, सो दैट अब स्कोर जो है वो मेरे पास कम हो गया, पहले स्कोर मेरे पास ज्यादा आ रहा था, ठीक है। इज इट क्लियर? सर क्लियर तो हो गया, फिर सर ये बात समझ नहीं आई कि मैच तो 3 हो रही है ना, तो फिर हमने पेनल्टी डाल के तो वो 2 हाँ, क्यों? वो असल में अगर हमारे पास एक और सीक्वेंस है और वो जो है वो अगर एक और सीक्वेंस है वो लाइक इस तरह है ATCG, और दूसरा सीक्वेंस हम उसको अलाइन कर रहे हैं एक और सीक्वेंस के साथ ATGG के साथ कर रहे हैं,
सो वो भी 3/4 आएगा आइडेंटिटीज के बेस पे, और ये भी 3/4 आएगा, ठीक है। लेकिन नेचर में ये ज्यादा कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन नहीं है, ठीक है। सो इसको अलाइनमेंट के, ये तो मैं सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड्स ले रहा हूं ना, लेकिन एक्चुअली में हमारे पास तो थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, हमने उनको अलाइन करना होता है। तो वहां पे एक्चुअल सिचुएशन जानने के लिए कि ये दो सीक्वेंसेस ज्यादा करीब हैं या ये दोनों सीक्वेंसेस ज्यादा करीब हैं, हमने पेनल्टी ऐड करनी होती है। उस पेनल्टी के बेस पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों करीब हैं, ये अलाइनमेंट जो है, ये दो सीक्वेंसेस करीब हैं इन दो सीक्वेंसेस के कंपैरिजन में। इज इट क्लियर और नॉट? सर यस लेकिन जब हम पेनल्टी ऐड कर देंगे तो फिर स्कोर तो चेंज हो जाएगा, वो तो हमें फिर फॉल्स ही नजर स्कोर आएगा। हाँ, स्कोर कम हो जाएगा। स्कोर जब कम तो हो वो फिर जाएगा, हमें ओरिजिनल पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर हमारे पास गैप था नहीं या स्कोर नहीं मिसमैच। नहीं स्कोर कम होने का मकसद ये है कि दे आर नॉट मच रिलेटेड इन कंपैरिजन विद दैट। स्कोर जितना ज्यादा होगा ओके, तो उसका मतलब है कि वो दो सीक्वेंसेस जो हैं वो ज्यादा लाइक उतने करीब ज्यादा हैं, इन सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे। जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन सर फिर हमें मिसमैच में और गैप में कैसे पता चलेगा कि ये स्कोर किस वजह से कम है? इस वजह से हम जो है वो गैप को ज्यादा पेनल्टी देते हैं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मिसमैच को भी हम पेनल्टी देंगे, ठीक है, लेकिन गैप्स को हम ज्यादा पेनल्टी देंगे। तो ओके उसके सर। तौर पे उस तरह हमें फिर लाइक दो सीक्वेंसेस है और वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल जी है, तो उसका स्कोर हमारे पास 100% आएगा। एक दो सीक्वेंसेस है जिसमें मिसमैचेस हैं, तो उसका जी स्कोर जो है वो उसके बाद आएगा, और जिसमें गैप्स हैं उसका स्कोर उससे कम होगा, सबसे कम आएगा। ओके सबसे सर। कम आएगा। एग्जैक्टली ठीक है। जी सर। फिर जितने गैप्स डालेंगे उतनी पेनल्टीज डालते जाएंगे। एग्जैक्टली उतनी पेनल्टी ज्यादा होती जाएगी। पेनल्टी हमने खुद ही डिसाइड करनी है ना कि गैप को हमने कितनी पेनल्टी देनी है, ठीक है। अप टिल नाउ इज सर क्लियर? जी जी सर यही फिर मैं बात वो नीचे वाला पॉइंट पूछ रही थी कि वो कह रहे हैं कि हम जितनी गैप पेनल्टीज कम करेंगे उतने गैप्स ज्यादा आएंगे। एग्जैक्टली। सो उसका मतलब है अगर गैप पेनल्टी कम करेंगे तो एल्गोरिदम ने खुद गैप्स डालते जाना है, क्योंकि उसे पता है कि स्कोर पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सर अभी हम ये भी तो कह रहे हैं कि अगर हम गैप्स डालेंगे तो पेनल्टी भी डालनी है। हाँ नहीं, पेनल्टी ये हमने खुद डालनी है ना, तो पेनल्टी फिर हमने खुद ऐड पेनल्टी हमने खुद ऐड करनी है। लाइक अगर मैं पेनल्टी -5 रखता हूँ, ठीक है, तो चांसेस बहुत कम है कि गैप्स हो, क्योंकि वो अलाइनमेंट करेक्ट होगी नहीं कि जिसका स्कोर बहुत कम होगा। तो स्कोर लेकिन सर ज्यादा, कोई हाँ जो थ्रेशोल्ड वैल्यूज होती होंगी गैप के लिए अलग और स्कोर एग्जैक्टली के लिए अलग ना? एग्जैक्टली इस वजह से ये कहते हैं कि हमने क्या करना है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को देख के पेनल्टीज ऐड करनी है, इसके बायोलॉजिकल ओके। सिग्निफिकेंस को देखना है, ओके ठीक है। सर। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल आ रही है, डोंट यू वरी, ठीक है। शुड वी गो फर्दर? ओके सर। And they are a bit different from nucleotide substitution. Like they are like in the nucleotide we have to check for only identities. Nucleotide में हमें क्या करना है, just identities देखनी होती है. Like we have to check either a, like if a sequence is A T G T C. So if the other sequence is A T C T C. So that's only the other are identicals, and this only the C is substitution. Or like, and this is either this will be identical or not identical, and this will not be identical. So, but in amino acid like M I L, M L I, like this is amino acid sequence and A. So this is amino acid sequence, and the other sequence is M I A. So this is now this will be either the sequence will be either identical. It can also be similar. It means that this leucine and isoleucine, they could be similar property. They can have similar properties. So in amino acids, we will be dealing with either either identities or similarities. And in nucleotides, we will be only dealing with identities.
So a conservative replacement, mutation, substitution in an amino acid replacement in a protein that changes a given amino acid to a different amino acid with similar biochemical properties like charge, hydrophobicity, and size. So like charged amino acid, if replaced with charged amino acid, that could mean that is similar amino acid. And if a hydrophobic amino acid, if replaced with a hydrophobic, that will mean is the substitution is conservative replacement are similar. And similarly, if same size amino acid are replaced with same size amino acid, so that's it. So but the problem will occur and a different amino acid if a charge is replaced with uncharged, a hydrophobic is replaced with a hydrophilic, and a small size with large size amino acid. So they will not be similar then. And so so the similarity will mean they will be having similar biochemical properties. If the replacement will have a similar biochemical property. So a radical replacement, so that will be a conservative replacement. So in conservative replacement, amino acid with same biochemical properties will occur. But a radical replacement, a substitution in an amino acid is an amino acid replacement that exchanges an initial amino acid to a final amino acid with different physiochemical properties. So if the replacement, if the amino acid having different amino acid properties, so that will be a radical replacement. So there are now two types of replacements in amino acid. The first one is conservative and the second one is radical. And if you can see here, this amino acid now so the amino acid, these are the amino acid sequences from chimpanzee, cow, rat, mouse, and human, and they are like non-conserved amino acids. These are the conserved. The conserved amino acid means the every amino acid is same in the column, so that is denoted by asterisk. And others are, if they are not conserved, like here is S and here are A and here is S, so that will be conservative. Here is not written as conservative. Conservative mean the amino acid that are replaced, they have similar similar properties, biochemical properties, physiochemical properties. And here is double dot, so that will mean conservative. Here is no dot, there are no dot, so that is non-conservative. And here also is non-conservative, non-conservative, and here is the semi-conservative, and here is conservative, and here is non-conservative. So, and that's it. Who will explain this slide? सर मैं बताऊं? हिजाब बता दें, शफीक इसके बाद आपने बताना। जी सर, आपने दो मतलब सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया, एक कंजर्वेटिव देन एक रेडिकल। और कंजर्वेटिव में आपने बताया अगर हम इसमें माइनर सीड कोई सब्स्टिट्यूट करके दूसरा ऐड करते हैं तो उसकी मतलब बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी जो पहले वाले से रिप्लेस किया होगा। और रेडिकल रिप्लेसमेंट में आपने बोला कि जो भी आप रिप्लेस करते हैं माइनर सीड, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो पहले रिप्लेस्ड वन से मैच नहीं करती हैं। एग्जैक्टली शफीक। यस सर, इसमें यही था कि जो कंजर्वेटिव रिप्लेसमेंट है उसमें जो अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूट करेगा उसकी प्रॉपर्टीज जो सब्स्टिट्यूट जिसको करेगा उसके साथ सेम होगी, इधर वे चार्ज में हो या हाइड्रोफोबिसिटी में हो या साइज में हो। लेकिन जो रेडिकल में होगा उसमें इंटायरली डिफरेंट अमीनो एसिड लगेगा, जो नीचे एग्जांपल में सर नॉन कंजर्वेटिव में देख सकते हैं ल्यूसीन और फिनाइल एलानिन है जो इंटायरली डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट क्लासेस में आते हैं, तो इस वजह से वहां पे जो नॉन कंजर्वेटिव रीजन मार्क किया हुआ। ठीक हो गया, दैट्स गुड। अच्छा, अब ये जो है ना, इसके अगर ये नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ये साइन से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। अगर स्टेरिक है तो दैट विल मीन दैट इज कंजर्व्ड, अगर सो दैट विल मीन दैट इज एडेनिकल, और अगर ये कॉलन है तो दैट विल मीन कंजर्व्ड, और अगर कुछ नहीं है तो दैट विल मीन नॉन कंजर्व्ड, अगर डॉट है दैट विल मीन सेमी कंजर्वेटिव, एंड दैट्स इट। ठीक है, एम आई क्लियर? Yes, sir. ठीक हो गया। And next to it is, okay, so consensus symbols are there. So these are known as consensus symbols.
these steric, the colon, and the with no sign and with dot. So a multiple sequence alignment produced by, so these are the multiple sequence alignment produced by cluster O of 5 mammalian histone H1 proteins. So there are 5 histone proteins, and they are all mammals. So they are mammalian histone proteins H1. And okay, so the sequences of are the amino acid for residues 120. And an steric indicates position which have a single fully conserved residue. So if that is fully conserved, so like steric will be there. And a colon indicates conservation between groups of strongly similar properties, that is scoring more than 0.5. This is a matrix, Gonit PAM 250 matrix. So this is a matrix, and on this matrix we will be discussing this matrix, the matrix in details. But on that matrix, if the score is more than 0.5, that will mean the physiochemical properties of the amino acids are strongly conserved, and therefore that will be written as colon. And if the score is less, if the score is equal to or less than 0.5, so that will be a period will be there, means a dot will be there, will be indicated. So that means that is semi-conserved. And next to it is while steric characters are still useful, the other characters like colon and dot should be ignored for DNA and RNA alignment. So for DNA and RNA alignment, there must be no colon or no dot symbols in the alignment, because there are only identities. Only if there is no identity, that means that is not conserved, because there are only 4 nucleotides, and those 4 nucleotides, there needs to be either identical or not. Am I clear on this? Yes, sir. Okay, and next to it is that is, if you can see, the upper diagram is the same on the left side upper diagram, and after that on the right side, this is a representation of the PAM 250 scoring matrix. And if you can see, this one is the same amino acids. They are the 2 amino acids sequences. They are aligned together, and the best path would be recognized, like the path that has maximum score, and that is recognized, like the AA is 2, and then should be R or like we will be discussing the matrix in detail. But here this is a glimpse of the matrix. And aliphatic, so the classes of amino acid, there are different classes of amino acid, like some are aliphatic groups. They have aliphatic amino acid, and that means glycine, alanine, valine, leucine, and isoleucine. And this is one letter representation. Hydroxyl group are sulfur, selenium containing amino acid, and they are serine, cysteine, selenocysteine, threonine, methionine. So these are sulfur or selenium containing amino acid. Hydroxyl group are sulfur and selenium. And the other one is cyclic. So proline is cyclic, and other ones are aromatic. So aromatic are phenylalanine, tyrosine, tryptophan. Some are basic, and they are histidine, lysine, arginine, and some are acidic. And acidic means aspartate, glutamate, aspargine, glutamine. So they are acidic, and glutamic acid, aspartic acid, and so on. So these are different groups of amino acids. And if some of the amino acid substitute within that group, that will be like more conserved in comparison to the others, if they are like substituted with the other groups. Am I clear on this? Yes, sir. वन Yes, लेटर sir. नहीं आई क्या? वन लेटर कोड की समझ नहीं आई. वन लेटर कोड ये है कि ये अमीनो एसिड एक लेटर से रिप्रेजेंट होता है ना. यहाँ पे पूरा नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे वन लेटर लिखे हुए हैं. ये
आपको सीक्वेंस, हाँ सीक्वेंस में नजर आ रहे हैं ना, तो ये 1 लेटर कोड है इन अमीनो एसिड्स के, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड सो ऑन, ठीक है। ये 3 लेटर कोड्स भी होते हैं, 1 लेटर कोड भी होते हैं अमीनो एसिड्स के लिए। तो सीक्वेंस में हम 1 लेटर कोड यूज करेंगे, ठीक है। So moving further, so PAM is the point accepted mutation. So point accepted mutation, PAM and PAM 250 scoring system is a scoring system, and we will be discussing that in detail later on. So a PAM P50 250 is a matrix, simply a PAM. So that will mean PAM 1 matrix multiplied by itself 250 times. So this matrix applies to alignment that shares about 20% amino acid identities, which represent about 2,500 million years of evolution. So this is how, so this is some of the basics of this PAM scoring system, and we will be discussing that. Don't like confuse that thing. We will be discussing this thing in detail later on. So these are editing, formatting alignments. So the PAM alignment, we will be discussing this in detail. And these are some practical tools, like you have to, for editing and formatting alignments. So which tool you could use? So sequence editors are there in the market. Manually they align, edit sequence. Visualization of data can be done with these sequence editors. Data management can be done with these. Import and export of data can be done, and graphical enhancement of data for presentation. So all these things can be done with these sequence editors. They are useful. So what are actually these sequence editors, and how could you know the sequence editor if you want to experience this sequence editor? Well, there are certain examples. Some are actually freely available. You go to the Google and just search BioEdit. So you can download this tool there from there, and you can use that this sequence editor, and you can align sequences, you can edit sequences on your own with using BioEdit. There is another tool known as DNA star. I can share this one with you. I have this DNA star, so I can share this. CLC sequence viewer is the third sequence editor. I can also share this one with you. I have it. And Genius, this is not freely available. I have it if you want to experience, but you need to I have it on my system. It is not like transferable. Okay. Okay, and then is vector NTI. This is a wonderful tool. Like the Genius and vector NTI, they are compatible to each other. Actually, Finch TV, we can edit sequence, and this is also freely available. So for you, if you want to work right now, you can search BioEdit, Finch TV. They are freely available. Download them and work with them. Like experience your experience with it, and it will work fantastically. So so your work is to download BioEdit and Finch TV. If you need DNA star CLC sequence viewer, I can provide them as well to you. And next to it is and the bottom line is how you could start working with it. Check few YouTube videos. There are small YouTube videos. They will go you through how to use these. And if you still don't understand, in the coming class, let me know. I will let you know how to use these tools. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, but do use them. Don't don't skip like using these, because they will be wonderful tools in your future experiments actually, and data analysis. Okay, so and going with practical session, this is your homework as well. So from nucleotide database to you need to go to the NCBI site. This is the site over here. Please download gene bank accession.
So you can go and download these accession numbers from there. These are the accession number. Just click on this side and write this number over there, and then click on the nucleotide, because it needs to search these sequences in the nucleotide database. So first you need to go over this site, and you need to like search in the database. Which database you need to search in there? Nucleotide database in the at this site, and then you need to check the sequence written over here, and then you can download this sequence from there. And so your work is to download these sequences from the NCBI. And after that, the software you can use is, if using personal computer, if you have a personal computer, please install CLUSTAL. I will share that with on LMS with you. And after that, install sequence demarcation tool. You can install, this is freely available. You can install that from this web page. Install it. Molecular evolutionary genetic analysis is mega. You can install this as well. Please do install all these three tools. I will provide the CLUSTAL and the rest too. They are available freely. Install them. And CLC sequence viewer, I will share that with LMS with you. And you need to install all these four, and then BioEdit, you install it from this site, and that's it. So first of all, you need to download these sequences. So that will be the sequence retrieval. Then the software, you download all these software, even though you will only need one, but having experience with all these tools will make you experience more about the sequence analysis. And after that, the turn for the analysis. So how you can analyze, search each of the 6 GenBank accession you have previously downloaded, this 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So once you download these accession, so using a basic local alignment search tool, so search them on BLAST. So do nucleotide BLAST, do nucleotide BLAST there, and align the 6 GenBank accession using. So now you need to align these 6 accessions using CLUSTAL, and use the option do complete alignment in the CLUSTAL. And for ACD, use the option do muscle alignment and save the identity score as matrix in .csv format. And after that, if you are using Mega, use the option do muscle alignment and save alignment. And after that, if you are using CLC sequence viewer, just click on do alignment, and that's it. Am I clear? सर ये असाइनमेंट है? ये असाइनमेंट नहीं है, ये आपके करने का काम है, क्योंकि आपके थ्योरी आपका प्रैक्टिकल कोर्स ऑलरेडी है. So if you are doing this, you will understand the essence of alignment. If you are not doing this, you will not understand what alignment is, how it will work. This is not assignment. This is not like marked assignment, and like this is just for your homework. Okay, sir. And this will help you understand actually the bioinformatics, the basis of bioinformatics, because everything will have the alignment on its basis. Like if you are going for protein sequence comparison, if you are like going for structure analysis, if you are going for protein modeling, the basis is alignment. So at least you should understand what alignment is, and you have to go through these tools. Am I clear? Yes, sir. So next to it is, so we are done with alignment. Any question if you have it in mind regarding sequence alignment, or is it clear?
क्लियर है? यस सर। यस सर। जी, so moving further. सर आप ये सब कुछ मिड में रखेंगे? जी जी, ये तो मिड का हिस्सा है। असल में हम बहुत स्लो जा रहे हैं, दूसरा सेक्शन जो है वो बहुत आगे है, बहुत काम किया उन्होंने, ठीक है। So we are slow and fast.